Thank you very much for joining this webinar. It's a very important day today, the World Water Day. We celebrate it on 22 March every year. This year, the theme of the Groundwater Day is the theme of the Water Day is the groundwater, and the slogan that is been assigned to this year's Water Day by the United Nations is uh, groundwater, and the slogan is making invisible visible. This this precious resource is invisible, and that is why we have been misusing this resource, lack of resources, and lack of knowledge, lack of information, and that is why it is important to visualize this resource, to understand this, to apply the science that is available here and there, and to use our knowledge of governance, to use knowledge related to management, and so on and so forth. So the UN's call for visualizing this invisible resource has been this has been worked on by several other organizations, institutions, and governments. In our little way, at the Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies, for last 6 months, we have been doing a study to understand groundwater by understanding the aquifers, by understanding the geology, geohydrology, hydrology, and knowing that how people at various levels, how people in various states at the local level manage to sustainably use this precious resource and help their livelihood and lives. So we started this project in 10 different states to understand the localized solutions of groundwater management, with the aim to know the knowledge behind these localized resources, the motivation that people have to manage these resources in sustainable manner, the governance practices that they have, the management systems they have in place, and by which they are managing these resources very well, and ultimately to understand whether these solutions and the successful implementation of these resources has any policy implications, or whether local state level policies have any in any sense help these solutions to prosper, to function properly, and to know whether there are any other policies lessons that we can learn from these resources and strengthen our policy framework at the state level and the national level. So this has been our study. We have been doing it in our 10 states in various parts, from west in Gujarat to east Assam, south in Tamil Nadu, and Punjab in the north, and several other states. So this 10 state study that we are doing has been, we are almost done with this study, and today on this very special day, we want to reveal our our findings, what we have learned so far, and what are the major policy implications. So this study we have been doing in collaboration with the various actors, various experts, civil society organizations, and researchers working in different states. Today, these experts, resource persons, these researchers will present their findings from different other states. We have total 6 presentations in this regard. And in the end, we will have a summary of this study, lessons learned from this study, and future recommendation for policy recommendation, which will be done by our director and the chair of today's program, Mr. Vijay Mahajan. So before we go into the specific presentation from the various states, I'll have a quick overview of the policy framework that is placed in different states. Since we know that
and policy frameworks are important to regulate, to manage our resources. And if policies are well in place, we can expect that we can have a better management. So I'll go with first. I'll have a overlook of the policy framework in different states, and then move into an overview of localized or locally appropriate solutions that have been studied by our partners and experts in different states. So let's start with Rajasthan. तो राजस्थान में जिस तरह से हम पॉलिसी फ्रेमवर्क देख रहे हैं, काफी लॉज प्लेस हैं, उसमें से राजस्थान रिवर बेसिन एक लॉ है जो सिर्फ इसी स्टेट में है, जितने भी स्टेट हमने स्टडी किए हैं उनमें से सिर्फ राजस्थान में ये स्टडी है, जहाँ पे हम जिसका पर्पज है कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच को स्टैब्लिश करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन उसके अलावा वहाँ पे 2010 में वाटर पॉलिसी डेवलप किया है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर के वहाँ पे बहुत कुछ हुआ नहीं है अभी तक। जो लॉ है वो अभी बिल फॉर्म में है, वो ड्राफ्ट है, उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पास नहीं हुआ है लेजिस्लेशन से। Then there are regulations related to rooftop rainwater harvesting. जो एग्जिस्टिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या पुराने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें कंपलसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंस्टॉल किया जाना की आवश्यकता है, क्या उसके लिए गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा राजस्थान वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी एक्ट है जो वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का भी स्टेट वाटर पॉलिसी है, ये भी 2010 में है। हालांकि 2012 में हमारी वाटर पॉलिसी, नेशनल लेवल वाटर पॉलिसी को अपडेट किया गया था। अब उत्तर प्रदेश में उसके बाद स्टेट पॉलिसी को अपडेट नहीं किया गया, पर है जो प्रोवाइड करता है कि हम ग्राम स्तर लेवल पे जो है सब कमिटीज को बनाएं जो अल्टीमेट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर के काम करेगा। इसके अलावा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पे लॉ है जो 2019 में बना और उसके रूल 2020 में आए हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी इरिगेशन के लिए जो है वहाँ पे 2009 में रूल एक्ट बना, उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत वाटर यूजर एसोसिएशंस डेवलप किए गए हैं एंड they are empowered to manage irrigation water through canals. इसके अलावा पंजाब में पंजाब वाटर रिसोर्स रेगुलेशन मैनेजमेंट एक्ट है जिसके जरिए जो है पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलप किए गए हैं। फिर उसके बाद पंजाब गाइडलाइंस फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंजर्वेशन, ये 2020 में बनाया गया है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर के या उसके रिचार्ज को लेकर के रेगुलेशन तय करता है। इसमें जो भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो भी लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो उसको कंजर्व भी करें। देन गुजरात की तरफ आते हैं। गुजरात में 3 डिफरेंट लॉज हैं। गुजरात स्टेट वाटर पॉलिसी 2015 में ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं किया गया है। इसमें प्रोविजन है कि हम फ्रेमवर्क लॉ डेवलप करें जो नेशनल पॉलिसी की बात करती है, लेकिन अभी तक वो स्टेट में अडॉप्ट नहीं किया गया है वाटर पॉलिसीज को। उसके अलावा गुजरात इरिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट 2013 है, जिसमें हम वाटर की सप्लाई जो कैनाल के थ्रू होती है उसके मैनेजमेंट को लेकर के या उनके कैनाल के कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। देन वाटर यूजर एसोसिएशन डेवलप करने के लिए गुजरात वाटर यूजर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट 2007 में बनाया गया था, जिसके तहत जो है वाटर यूजर एसोसिएशंस बनाई जाती हैं, वो लोकल लेवल पे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का काम करती हैं या कैनाल वाटर का मैनेजमेंट करती हैं। देन मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में इरिगेशन एक्ट है, बहुत पुराना है। इस तरह के एक्ट बहुत अलग अलग स्टेट्स में भी हैं, जैसे पंजाब में भी है, वो मेंशन करना भूल गया मैं। ये कैनाल को मेंटेन करने, उसका कंस्ट्रक्शन करने या कैनाल ऑफिसर डेवलप अपॉइंट करने का प्रोविजन है इसमें। उसके अलावा मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, ये अधिनियम जो है फिर अगेन वाटर यूजर एसोसिएशन डेवलप करने की बात करता है, ताकि ग्राउंड स्तर पे
वाटर को लोग खुद अपने तरीके से मैनेज कर सकें। एंड देन स्टेट वाटर पॉलिसी तो 2003 में बनी है। अगेन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये भी पुराना पॉलिसी है। ये पॉलिसी भी जो 2012 में नेशनल लेवल पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया, उसके बाद ये अपडेट नहीं हुआ है। देन तमिलनाडु में है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट जो है ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करता है, सिर्फ चेन्नई जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसी में करता है, और उसके बाहर इसका स्कोप नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है काफी लोगों का डिमांड था कि इस तरह का लॉ जो है पूरे स्टेट में होना चाहिए। देन तमिलनाडु लॉ ऑन ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ये ड्राफ्ट किया गया है। हालांकि ये अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है, पर ये उसी पैटर्न पे है जिस तरह से पहला वाला लॉ है, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट है, लगभग वैसा ही है। देन उसके बाद तमिलनाडु प्रोटेक्शन फॉर द टैंक्स एंड इविक्शन इंक्रोचमेंट एक्ट। तो ये शायद हमारे अभी एक्सपर्ट अरुंधति इसके बारे में शायद हो सकता ज्यादा बताएंगे। वहाँ एक टैंक सिस्टम है, कास्केडेड टैंक्स बनाए जाते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो वो उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए और इंक्रोचमेंट ना हो उसके लिए जो है ये किया जाता है, ये एक्ट बनाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन, ये कावेरी डेल्टा रीजन के लिए बनाया गया है, जिसको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन इसके इस एक्ट के जरिए नोटिफाइड किया गया है। देन असम में है द असम एम्बार्कमेंट एंड ड्रेनेज एक्ट 1953। ये एम्बार्कमेंट के कंस्ट्रक्शन एंड रिमूवल एंड अपकीप के को देखता है। देन असम एम्बार्कमेंट एंड ड्रेनेज वैलिडेशन एक्ट, इसके जरिए जो है वाटर रेट्स को डिसाइड किया जाता है। देन आसाम ग्राउंड वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट है, ये ग्राउंड वाटर अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए बनाया है, और वो अथॉरिटी जो है फर्दर अपने रूल्स के जरिए जो है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर के अलग अलग पॉलिसीज और प्लान एंड स्कीम्स डेवलप करती है। देन आसाम इरिगेशन एक्ट 1983 है, जिसमें इरिगेशन कैनाल्स को बनाना और उसको मेंटेन करना का प्रोविजन है। देन आसाम इरिगेशन वाटर यूजर एक्ट, इसमें वाटर यूजर एसोसिएशन डेवलप किए जाते हैं जो कैनाल के आसपास के लोग तो पानी को यूज करते हैं। इन महाराष्ट्र में द महाराष्ट्र ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एक्ट मैनेजमेंट एक्ट है, जिसमें ग्राउंड वाटर अथॉरिटी डेवलप किया गया है। देन महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये दूसरा अथॉरिटी डेवलप किया गया है महाराष्ट्र में। देन महाराष्ट्र मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम एंड द फार्मर्स एक्ट, ये एक्ट जो है वाटर यूजर एसोसिएशन, जो लोकल लोगों को पावर देता है कि वो अपने वाटर को मैनेज करने के लिए करे। एंड देन महाराष्ट्र स्टेट वाटर पॉलिसी, ये अभी कुछ साल पहले 2019 में आई है वहाँ पे। एंड वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2005 में है। ये ग्राउंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश किया गया है इसके जरिए। एंड देन ये अथॉरिटी जो है फर्दर ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करती है स्टेट में। देन ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स को लेकर के, जो कोलकाता का ईस्टर्न साइड में जो वेटलैंड्स है उनको रेगुलेशन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए ये एक्ट बना है। देन बंगाल इरिगेशन एक्ट 1876 है, अगेन जो इरिगेशन स्कीम्स है उनको बनाने में, कैनाल को डेवलप करने में, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए ये एक्ट है। एंड देन बंगाल एम्बार्कमेंट एक्ट, ये भी एम्बार्कमेंट के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए ये एक्ट है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, मोटा मोटा देखें कि सभी स्टेटों में जो ये हमने 9 स्टेट इसमें इंक्लूड किए हैं, तेलंगाना का अभी हमने नहीं लिया, उसमें थोड़ा उसको हम आने वाले टाइम में उसको इंक्लूड करेंगे, 10वां स्टेट है। अभी हमने सिर्फ 9 स्टेट को इसमें लिया है। इसको अगर हम देखें तो जो स्टेट वाटर पॉलिसीज है वो 5 स्टेट में, 9 में से 5 स्टेट में हमारी वाटर पॉलिसी बनी है। हालांकि वो 2012 के जो नेशनल पॉलिसी उसके अधिकतर स्टेट में उसके बाद वो अपडेट नहीं हुई है, उसके बेस पे अपडेट नहीं हुई है। देन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट लॉ जो है हमारे पास 5 स्टेट में है, और 2 स्टेट में है ही नहीं, और 2 स्टेट में अभी ड्राफ्ट फॉर्मेट में है। वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये भी 4 स्टेट में है और बाकी स्टेट में नहीं है।
पार्टिसिपेटरी इरिगेशन थ्रू वाटर यूजर एसोसिएशन, ये भी हम 4 स्टेट्स में है और बाकी 5 स्टेट में नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे वाटर स्ट्रक्चर्स है, जैसे कैनाल है, ड्रेनेज है, इम्बार्कमेंट है, टैंक्स हैं, उनके मैनेजमेंट को लेकर के, उनके कंस्ट्रक्शन को लेकर के या उनके इंक्रोचमेंट को देखने के लिए हमारे जो है 6 स्टेटों में इस तरह के लॉ है और 3 स्टेटों में नहीं है। ये तो सीधे एग्जैक्टली जो वाटर से रिलेटेड लॉ पॉलिसीज हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन और इसके अलावा भी बहुत सारे और पॉलिसीज लॉ होते हैं जो वाटर को इम्पैक्ट करती है। तो अगर हम उनको देखें, जो बाकी पॉलिसी है जिनका इफेक्ट जो है हमारे ग्राउंड वाटर पे होता है, तो उसमें देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड सब्सिडाइज्ड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। अगर आप देखें कि जो ये पॉलिसीज जो ग्राउंड वाटर को इफेक्ट करती है वो लगभग हर स्टेट में बनी है। ये बेसिकली एक्सट्रैक्शन एंड डिमांड को रेगुलेट करने के लिए है, या डिमांड को बढ़ाने के लिए है, या डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ये पॉलिसीज हैं। तो ये ऑलमोस्ट सभी स्टेट में बने हैं, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल में सब्सिडाइज्ड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजर्स की का प्रोविजन नहीं है। बाकी सभी स्टेटों में ये पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो था पॉलिसी फ्रेमवर्क इन 9 स्टेट्स का। इसके बाद हम अगर देखें कि लोकली एप्रोप्रिएट लेसन्स जो हमने स्टडी किया है इस पूरे उसमें, अगर उसका एग्जिस्ट देखना चाहें, इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं बस उसको थोड़ा रन थ्रू कर रहा हूँ। राजस्थान में देखें तो बहुत प्रकार के लोकलाइज ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ नए हैं। जिसमें पार मैनेजमेंट है जो साउथ वेस्टर्न डेजर्ट में बनाए जाते हैं, कुआं परिवार है, जो हर्ड रेजुगनेशन है, पाल पोखर बनाए जाते हैं वहाँ पे, फार्म पोन्ड्स लाइन वाले बनाए जाते हैं, रूफ वाटर रिचार्ज ये काफ़ी बनाए गए हैं वहाँ पे, और भूजल जानकार ये ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है, लेकिन नया सिस्टम है जो वहाँ पे काफ़ी कई जगहों पे ये काम किया गया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। देन उत्तर प्रदेश में देखें तो तालाब अभियान करके एक पूरा अभियान है जिसमें तालाब बनाए जाते हैं। इसमें हमारे स्ट्रीम्स का रिजुविनेशन है, इंडस्ट्रियल एक्शन टू रिड्यूस वाटर डिमांड। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जैसे कानपुर के साइड में, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वाटर के यूजेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिफिशियल रिचार्ज के काम हो रहे हैं। वज़ीर पंजाब में खेती विरासत मिशन है, विलेज पॉन्ड के रिजुविनेशन के काम हैं, आर्टिफिशियल रिचार्ज बाय गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा भी हो रहे हैं। ये इनके बारे में हमको ज़्यादा दीपक शर्मा जी बहुत डिटेल में बताएंगे। पर ये एक लिस्ट है स्टेटों की कि जहाँ पे हम लोकली अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस लोगों ने डेवलप किए हैं। इसके अलावा गुजरात में ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू डिफरेंट बोरवेल का इस्तेमाल करके कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा रहा है कच्छ एरिया में। देन एक्यूफर रिचार्ज थ्रू कम्युनिटी, ये भी कच्छ में रीजन में किया जाता है। भूजल जानकार पेगरज में ये काम हो रहा है। जो वाटर यूजर एसोसिएशन का काम है महसाना में जेसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम किया जा रहा है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में फ्लोरोसिस मिटिगेशन का काम हो रहा है धार वाले रीजन में। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का काम खांडवा में हो रहा है जिसको हमने स्टडी किया है। खेत तालाब जो टीकमगढ़ में काफ़ी समय से हो रहा है काम, जिसमें हम भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ये है महाराष्ट्र में पूर्ण वैली प्रोजेक्ट है। पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए हैं जलगांव में। हमारे साथ है युगंधर जी, वो ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे। और उसके अलावा तमिलनाडु में आइफा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इससे, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो उसके बारे में अरुंधति बहुत डिटेल में हमको बताएंगे। मदुरई एरिया में टैंक सिस्टम है जो कास्केडेड टैंक्स बनाए जाते हैं। वो एक बहुत पुराना तरीका है लोगों का, अरुंधति उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लोकलाइज सॉल्यूशंस के। वेस्ट बंगाल में एक्यूपर स्टोरेज एंड रिकवरी सारी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो बहुत सारा काम कर रही है इसको सुंदरबन वाले एरिया में। सैल्यू एक्यूपर के रिचार्ज है छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में कर रहे हैं।
रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हिमालयन फुटहिल्स जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, कालिम्पोंग दार्जिलिंग वाला एरिया है, उसमें काम किया जा रहा है। स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट, ये भी हिमालयन जो फुटहिल्स है उसमें प्रसारी के द्वारा किया जा रहा है, इसको भी हम लोगों ने स्टडी किया है स्टडी में। एंड देन आसाम में विलेज पॉइंट जो तिरंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर इस तरह के काम वहाँ पे हो रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल जिस तरह के लोकलाइज सोल्यूशन को हमने इस प्रोजेक्ट के दौरान स्टडी किया है, ये जिस था, और इसको इलाबोरेट करेंगे हमारे आज के मेहमान। हमारे मेहमान आज हैं युगांधर हैं, जो महाराष्ट्र में हमारे साथ ये स्टडी कर रहे हैं। दीपक योगी जी हैं, जो गुजरात, और कुंज है उनके साथ, जो गुजरात और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। अरुंधति तमिलनाडु में कर रही हैं। उनवा और उनकी टीम, प्रसारी की टीम जो है ये वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं। दीपक शर्मा जी राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। और बिटुपन और उसके दोस्त मनोहर, ये जो है आसाम में काम कर रहे हैं। तो हम अब इनसे सुनेंगे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल। शुरुआत करेंगे, मैं सीक्वेंस बता देता हूँ कैसे शुरुआत करना चाह रहे हैं। हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो मैंने सोचा है युगांधर शुरुआत करेंगे पहला, देन दीपक योगी जी, एंड देन अरुंधति, उन्नवा, दीपक शर्मा जी, एंड देन बिटुपन एंड मन। So thank you for listening me, and we'll go to Yugandhar ji first to learn what is happening in Maharashtra. Thank you, Jeet. Thank you, everyone. Let me start with a little bit of background. That while Jeet has talked a lot about various measures on supply side management of groundwater, I would be speaking a little more on the demand side management, and also kind of presenting the situation of Maharashtra. So I'll be talking about what is the situation of groundwater in Maharashtra, and then I will present a case study which talks about the demand side management of groundwater. Little bit of background, जीत ने ये पहले ही बताया है कि ये हमने एक स्टडी तो शुरू की है जिसका उद्देश्य ये था कि ये 7-8 अलग-अलग स्टेट्स में एक हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, फिर ग्राउंड वाटर की सिचुएशन क्या है, जो सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन बेसिस पे हम कितना ग्राउंड वाटर हमें प्राप्त हो सकता है, और तीसरा कि हमारे ट्रेंड्स ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या लोकलाइज कौन से लोकलाइज सॉल्यूशंस इस इलाके में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है, ये महाराष्ट्र की ग्राउंड वाटर की सिचुएशन जो है, ये काफ़ी फैक्टर्स पे निर्भर करती है। बेसिकली फिजियोग्राफी, द हाइड्रोलॉजी, इंक्लूडिंग द varying rainfall patterns, the uncertainties related to the rainfall, then geology. और इसके चलते जैसे कि मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र की जो ग्राउंड वाटर सिचुएशन है, it is affected by several factors. One of them is geology. और जैसे हम जियोलॉजी को देखते हैं तो महाराष्ट्र के जियोलॉजी लगभग 82% ऑफ द लैंड, 81.2% ऑफ द लैंड इज ऑफ बेसाल्ट, विच इज कॉल्ड डेक्कन ट्रैप लावा फ्लोज। इसके साथ साथ हमारे नॉर्दर्न एरिया में थोड़ा सा हमें एल्यूवियल सेडिमेंट्स मिलते हैं जो तापी और गोदावरी बेसिन में। ईस्टर्न साइड में हमें गोंडवाना सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। Vindhyan Kadappas are on the southern fringe of southwestern as well as southeastern side, और आर्कियन धारवाड़ मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्सेस भी हमारे एरिया में इधर साकोली की तरफ मिलते हैं, और इस तरफ अपने गोवा के तरफ मतलब साउथ कोकण में भी मिलते हैं। तो ये जो हार्ड रॉक वाली सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन काइंड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग वाटर, क्योंकि इनमें अपनी प्राइमरी पोरोसिटी होती नहीं है। So the water exists in the cracks and fissures and it transmits through that. So इसको assess करना भी एक little bit of difficult affair.
तो महाराष्ट्र में एक्चुअली GSDA, ग्राउंड वाटर सर्वे एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एज अ स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, और दे स्टार्टेड असेसिंग द ग्राउंड वाटर सिचुएशन। तो 1973 से ये चल रहा है, लेकिन द फर्स्ट साइंटिफिक असेसमेंट वाज डन इन 1979 and it was based on the recommendations of there was an over exploitation committee which was set up by ARDC. They gave this report of assessing the groundwater situation so that we can plan our economic development based on that. उसके बाद बहुत सारी मतलब कमिटीज स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, जिन्होंने अलग अलग मेथोडोलॉजीज बताए, और उसके तहत आगे का जो भी हमारा ग्राउंड वाटर असेसमेंट था दैट वाज बीइंग डन. So why it is important is that to talk about these methodologies, because there have been some changes, and sometimes it is difficult to kind of compare what the kind of data or the findings of one study with the other because of some changes in methodology. Lekin for the large part, that is from 2000 onwards to 2013, हमारा जो assessment हुआ था, that was based on that groundwater estimation committee of 1997. उसके पहले जो था 1984 की जो कमेटी थी उसकी मेथोडोलॉजी के तहत हुआ था, और अभी रिसेंटली जो लास्ट 2 असेसमेंट्स हुई है वो 2015 की जो कमेटी ग्राउंड एस्टिमेशन कमेटी के रिकमेंडेशन से उनकी मेथोडोलॉजी के तहत हुआ था. अब ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी पे चलते हैं कि हाउ मच इज द ग्राउंड वाटर दैट वी कैन एब्स्ट्रैक्ट. जो टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिचार्ज और वी कॉल इट आल्सो डायनामिक रिजर्व, ये तकरीबन 30 बिलियन क्यूबिक मीटर से 35 बिलियन क्यूबिक मीटर तक रहे हैं, और इट हैज बीन मोर और लेस कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर 2008. यू फाइंड अ पीक इन दिस ग्राफ, and likewise the use also kind of increased in 2008. It peaked a little, and then it has also been more or less constant. It has been close to 13 billion cubic meter to 17 billion cubic meter, and the balance, which is this black kind of graph area underneath, is also has been more or less constant. There have been some small decline, but it is not very significant. ये उनके फिगर्स है, लेकिन आई वुड नॉट टेक यू थ्रू दिस टेबल. एक ही रो को आप देखिए, व्हाट इज कॉमन इन दिस ट्रेंड इज दैट the gross annual groundwater withdrawal, that is how much water you have been using, has been consistently increasing as a proportion of net availability. तो ये देखिए, तो 2000 में लगभग 43% था, तो अब ये 54, 56, 50 के ऊपर चला गया है. तो this is an important factor to note at this stage. We also use this categorization called white, gray, dark, and overexploited watersheds as far as the groundwater exploitation was concerned. और इनकी डेफिनेशन जो थी वो ऐसे थी कि भाई आपके पोटेंशियल का 65% आप इस्तेमाल कर रहे हो तो यू आर इन अ सेफ जोन, व्हाट इज कॉल्ड व्हाइट वाटरशेड. 65 to 85 है तो ग्रे. तो ये दिस मेथोडोलॉजी एंड दिस नॉमेनक्लेचर एग्जिस्टेड फ्रॉम 19 until 1990. 87 और 90 की जो असेसमेंट थे उसमें ये इस्तेमाल किया. Subsequently, it got changed slightly into the 4 categories of overexploited, critical, semi-critical, and safe. तो ये जो मेथोडोलॉजी थी इसमें इन्होंने ये किया था कि मान लीजिए if you have a long term, normally 5 to 10 years में you have a declining groundwater table, so your categorization changes. If you have an increasing category groundwater table, both pre-monsoon as well as post-monsoon, तो उसके आधार पे ये नया मेथोडोलॉजी इन्होंने ये किया. इसमें भी देखिए तो द ट्रेंड्स आर नॉट वेरी अलार्मिंग, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, on the left you have this watershed wise classification, on the right you have this blocks, that is community development blocks और तहसील के हिसाब से classification किया है. What is happening is that the green area, that is the safe watershed, is reducing. Not very steeply, but that is reducing. That means that we are facing groundwater stress in some parts of the state. This is the data. These are the numbers.
which have been used for preparing that graph. Coming to the challenges, uh, there are two or three things which are important here. One is that the geology is complex, the rainfall is also variable. So these two always pose the challenge. The second is that methodology of assessment has been improving with different committees and different scientists bringing in new methods, but it is still improving a bit slowly. The third is the demand is increasing continuously. तो ऐसे सिचुएशन में हम ग्राउंड वाटर के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसमें यदि देखा जाए तो देयर आर सप्लाई साइड मैनेजमेंट, जैसे ऑगमेंटेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इंड्यूस रिचार्ज है, फॉर्म पॉन्ड्स वगैरह, ये सब चीजें, वाटरशेड डेवलपमेंट, दीज आर ऑल सप्लाई साइड मैनेजमेंट थिंग्स. Many other experts will be talking on that. Second is the demand side management, कि भाई कितना पानी है, assess the quantity of water that you have and plan your use accordingly. So water budgeting, water use planning, and optimizing the allocation of water for different use. और ये करना, इसको मॉनिटर करने भी ये जरूरी है. So ये महाराष्ट्र में एक जगह पे ऐसा किया गया, ये बहुत सारी जगह पे किया गया, लेकिन एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, which is of Malegaon aquifer in Jalna district. This is in Bhokardan block of Jalna. It is a not exactly a arid topic, but a tropic, but it is a part of drought prone area. So यहाँ क्या हुआ था? So let's quickly go through the history. There is an organization, civil society organization called Water or Watershed Organization Trust. They have been working in this area from 2008, and in around 4 villages they implemented watershed development project under one program, and another few villages another program from 2008 to 2011. And they did it very scientifically, rich to valley approach, covering a lot of area under soil conservation work, water conservation work. But during the drought of 2012 to 14, people found that during the drought of 2012 to 2014, people found that their agriculture needs of water are still not being met. So they started working on induced discharge. I mean, this photograph is of a bore well which is kind of drilled to in the bed of a this thing percolation tank to induce groundwater recharge, what people call artificial recharge also. They also did the scraping of tank beds, scraping of nala beds, widening and deepening of nala, desilting of various water structures, so that the recharge increases. Yes, it did help, but still these measures were inadequate. So they started thinking little more on the demand side, how to reduce the use using micro sprinklers and drip irrigation. But that was also not everyone did that, and it was also a sporadic effort. Its result was also inadequate. So they had this watershed development committees. They came together and thought something about it. And at that time, they approached Watershed Organization Trust, who brought in some groundwater scientists, and together they did a kind of assessment of groundwater in that entire region. And when they did the assessment, they realized that, oh, it's not only this 3 or 4 or 5 villages, or it's not this 2 big watersheds. It is almost 14 watersheds that are kind of getting influenced by each other's conservation practices and water use practices. So that was the first kind of understanding of an aquifer these people got. That was at around 2014, 2015. And simultaneously, in order to kind of facilitate the process, GRASP trained these barefoot technologists, water technologists, who understood the geology, who understood the water use, and who were helping the people in doing their own water resources planning. Then they had this village watershed committees. They found out that we have to kind of collaborate with these 14 villages. So they set up different water users committees in these remaining villages, and finally a federal aquifer level committee was set up. Now what these people do is that they collect the rainfall data, they collect the well water table, they monitor the well waters every season, and
Based on that, they assess that okay, so much of water is existing in our watershed or in our aquifer this year, this season. So they do their crop planning based on that. This was something started in 2016. By 2017 and 18, they have started kind of preparing the water health chart for their respective villages, and also preparing water budgets for the entire aquifer. So this was something, was a gradual step in learning of these people about one, the availability, and how to kind of limit or rather rationalize the use so that we don't suffer, or anybody who is having less water or less access to water suffers. So this was kind of a turning point in the history of this Palegaon aquifer, which happened. These are some of the photographs which show what are the kind of analysis these people do collectively, the watershed committees plus some this water jalduts or whatever the barefoot technologists, and uh, based on that they kind of advocate, okay, we will do only this, we will not only different crops, not taking any water intensive crops, which crop to be sown in which season, uh, how much kind of area you can cover under different crops, that the planning is done at the village level. And then they also frame rules that, for example, in these villages, water intensive crops like sugarcane and bananas are totally banned. If you want to go kind of grow summer vegetables, it should be only on drip irrigation, or you should have some water saving methods like sprinkler irrigation. And they also restricted the use of certain crops so that because of over extraction by one person, the others do not suffer. Uh, Recently, they have kind of started the registration under this Societies Registration Act, and all these things, they could make beautiful use of this 2009 Groundwater Management Act of Maharashtra, which actually uh, got passed in 2014. I mean, it came into force from in 2014, but the provisions of those act in terms of registering of wells, preparing groundwater management plans, preparing assessments every year, all those things are being done together with the gram panchayat and the local authorities. So even the local authorities are finding it quite interesting, and they are also supporting this village more for some supply side management things, like if there are any schemes on nala deepening or desilting, the government officials kind of give those schemes, allocate those resources to these villages in on priority. So uh, uh, just to summarize, I would say that what are the main components that contributed to the success in this? I mean, if you call it a success, yes, it is indeed a success. One is that the scientific assessment, uh, it was helpful in improving the understanding of the community. Then awareness on the legal aspects, the laws, and there are special efforts taken by water, the implementing organization, to build that awareness. देन दिस बेयरफुट टेक्नीशियंस, जिनको आप जलदूत भी कह सकते हैं, इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया, और दे वर अवेलेबल ऑन द स्पॉट बिकॉज यूर जियोलॉजिस्ट एंड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, the senior experts may not come to the village every now and then, but you had a representative or you had a person who could broadly kind of address any queries or any doubts of the local people. So those barefoot technicians, where the cadre was created by water, that was useful. Water budgeting as a tool. This was a kind of tool, basically water balance. How much is what is coming? How much is the rainfall? How much is flowing away? And how much is the levels? How the well water levels are fluctuating? So those things gave a very good idea, and people started interpreting this data, which is very important, because you may have data floating around, but its analysis and interpretation is important. And the villagers develop this skill over a period of time in the water budgeting.
they engaged with the Gram Panchayat. They kept, because all these village water management committees are part of the Gram Panchayat now, because the 2009 Act provides for having those water committees in Gram Panchayat as Gram Panchayat special subcommittees. So these people are conducting most of the water budget, water balance studies and crop planning in the Gram Sabhas. As a result, it gets a kind of certain sanction from the local institution. And participatory planning was of course there, but there was a focus on equity, that if the uh, person who is having the least access or the very low access to certain resources, uh, his needs were kind of addressed first while doing the collective crop planning. And then the capacity building, which has been a kind of a very systematic process that has been kind of undertaken by water. And yes, the participation of men and women was very good. In fact, one of the women member of this water aquifer committee got a prize at the hands of president recently for her work. Recently means about 3 years ago, for her work in this water management. So the role of women is also kind of very much underscored as a part of this strategy. So I will kind of end here and hand over the things back to you, Jeet. Thank you, Randa, for such a wonderful presentation. You rightly summarized in the end that how operative work enabled by appropriate policies and organization technologies help to do wonder in this particular case study. So moving ahead, now Arundhati, it's your turn. Arundhati is an expert on groundwater and she is working in Tamil Nadu on this project. He's been working in South India, but for this particular project, he has been working in Tamil Nadu. So over to you, Arundhati now. Hi, thank you. I wouldn't introduce myself as an expert, but yeah, I have done some fair bit of work. Very quickly on the policy, I just wanted to clarify that there's a as you have marked on the table there is a draft of the Groundwater Development and Management Act, which in fact actually does propose the creation of a Tamil Nadu Groundwater Authority. Just wanted to clarify that. There's also a Tamil Nadu, through people I've been speaking to, which there is a Tamil Nadu State Water Management Policy 2022 has been drafted actually, but and soon to be circulated. This came up because the State Development Policy Council, which was asked to prepare papers on 10 issues, this was one of the areas that they were asked to prepare a paper on. So this Water Management Policy 2022 is an outcome of that group working on it. I think it's soon to be circulated for comments, etc. This I only came up with this because I saw it in one of the other presentations. Sorry, which is that there is something on rainwater harvesting structures. It was an amendment made to the Tamil Nadu District Municipalities Act 1920 and Building Act 1973 that made rainwater harvesting structures mandatory, but even a recent survey in 2019 showed that it was very poorly implemented. I just wanted to clarify on that. On Water Users Association, I'm not very sure myself. So if Dr. Nirmala can clarify on that at the end of my presentation, that would be on their role in Tamil Nadu. So I'll quickly go over to my presentation. I will also very, very briefly go over the hydrogeological context of the state and how that actually kind of predisposes the state to groundwater scarcity and deficits. So, I mean, simply because of the hydrogeology of the state and the fact that about 73% of the state has an underlying layer of hard rock, right, which basically is widespread. It has very low storage aquifers across most parts of the state, except in the coastal areas to some extent. And these low storage aquifers also have low transmission capacity, which means water doesn't flow so easily across from one to the other. So for this reason, judicious water management has always been an imperative for the state for a very, very long time. And
Looking at the groundwater status of districts across the state, it's very clear that the northern, western, and central districts have the poorest groundwater status in the state. Irrigation, again, is the biggest consumer of groundwater in Tamil Nadu. In fact, I think it is nationally. Some 92%. This is according to the Central Groundwater Board estimates. 92% of the groundwater in the state is consumed by for agricultural purposes. So historically, because the state has been water deficit and is almost structured to do so geologically, it has relied on surface water structures to meet many of its needs, as well as to be the point of entry to recharge groundwater where it's used. But the degeneration of the surface water structures has accelerated in recent decades. And particularly after borewells became a reality, it's really blown up, and that has led to people preferring that, because that just basically means that you tap the water under you. There are no laws in India that actually govern that. There's something called the Easement Act, as far as I'm aware, that goes back very centuries ago, which allows you to tap whatever's under you. And there's no real governance of that in that sense. So for many reasons, particularly the advent of electricity and borewells, etc., surface water structures started becoming neglected more and more over the course of time, and the area under canal and tank irrigation has stagnated and decreased respectively since the 1960s. This is a quick look at the Central Groundwater Board periodically does an assessment of groundwater in Tamil Nadu. It does it at something called the Firka level, which is even smaller than the taluk. It's about 10 to 15 villages, as far as I understand. So this is the level, this is the unit, very granular unit at which groundwater assessments are made. And what it shows you, the latest assessment came out in 2020, and what this shows us is that 37.3% of the state of the Firkas assessed were overexploited, as you can see the pie, right? So a significant bits are either overexploited, critical, or getting there, and they're at the semi-critical stage. So only 35% is safe. You'll also see that I've captured the trends from 2011 to 2020, and the number of safe units has consistently come down. Though to some extent, some cause for cheer. Between 2017 and 2020, the number of overexploited units has actually gone down a small bit. That's true for critical units as well. So I'm now moving on to the Kaveri Delta region, where that's the case study. That's a single case study I'm going to cover today. So we looked at the Kaveri Delta region. I looked at the Kaveri Delta region. And if particularly at Tanjavur, which is called the rice bowl of Tamil Nadu, that's where the bulk of rice is grown. And as the name suggests, it's the Kaveri Delta, and one would imagine that the extensive surface irrigation networks would be more than sufficient to service agricultural needs, but clearly not, because groundwater exploitation has been increasing quite significantly over the past decade, as the bar on the left will show. As you can see, 92% of the assessed units in Tanjavur were not safe as per 2020 data, and 60% were overexploited, which is a huge concern in a region which is, which is a delta region. Here's the data of annual extraction process, as the earlier presentation also alluded to what this means, and how in I suppose many states and many districts would show that this is consistently coming down. That's the ratio of what is available to what is being extracted annually. So this is what's been happening in the Tanjavur region. So surface water bodies are clearly critical to groundwater conservation and recharge. And many lakes and tanks and ponds, all sizes of water bodies in the Kaveri Delta zone are in a state of neglect. These structures play a very critical role in actually ensuring that water seeps down and recharges groundwater sources. They become even more significant in the context of climate change, where we'll see more extreme. Rainwater is one of the main ways in which water gets recharged in these areas, and with
with spread over temporarily in a sensible way, we'll find that actually capturing that water when it falls is very, very critical. Otherwise, it's just going to be surface runoff and go into the sea or go away from that region and not be available for use. Therefore, these serve multiple purposes. They serve as capture structures and they also serve as seepage structures. And therefore, they're of extreme importance in ensuring groundwater recharge and conservation. The Public Works Department is responsible for tanks which are, or any water body that's larger than 40 hectares in size. And it maintains some 559 lakes and tanks in the district at the moment. There are also many smaller bodies which are under the Rural Development Department, Panchayat unions, who are in charge of these. As across the state, over time, water bodies in this state, in this district, as well as across the state, have suffered from neglect. So they have very low or no carrying capacity. The model I looked at as for my case study was this new model that that Kaifa has sort of created. Kaifa is the Kadaimadai Area Integrated Farmers Association. It was formed in 2018. So essentially, how it came to be was that it was a cyclone Gaja, which basically destroyed a lot of Tamil Nadu, but particularly crops and coconut groves, etc., in the Delta region. It really wreaked havoc, and people were left with little option. I mean, many of them, as I understand it, considered actually giving up giving up agriculture altogether or relying partially on other kinds of jobs, because especially those who lost coconut farms, coconut groves, because these are the gestation period, they need time to grow back, and it was just overnight it was destroyed. So a group of people came together initially only to participate in relief efforts. These were young people who worked in other places, but back home, were around there at that time. They decided to run a campaign to assist relief work in the region. Unique about this was that they used, they were, they worked in the cities, they had access to modern tools, etc. What they did was they ran massive campaigns to a lot of it was online actually, and they managed to raise resources for themselves through this campaign, and they got a lot. Their campaign went viral, and they managed to get a lot of relief, including international relief from individuals across the. So as relief work progressed, what they came to understand was that this was not sufficient to keep. I mean, the farmers were, of course, their livelihoods had an immediate and present threat, but there were also long-term issues that they'd been facing, which they became familiar with. They were young people from there, but who had sort of moved away from agriculture in some sense. They felt inspired to stay on and actually expand the scope of their work and to address the other issues that the farmers in the region were facing. One of the big issues that came up in conversations with everyone was water depletion. So they formed this association and they started engaging and working with a primary focus, I'd say, on innovative water revival across the region. So their first project, actually, they were not thinking of like doing many things. They looked at the lake before them, which was the Periyakulam. Kulam is a big water body, a big tank or lake. Periya is big, so it's Peravurni Taluk is located at the southern tip of Tanjavur Tanjavur district, and it's one of the biggest lakes in that region. It was initially spread across 565 acres, but apparently because of encroachments that has come down considerably. And the associate irrigation area was about 6,000 acres. Then, and water from that would benefit or affect over close to 2 lakh people. So prior to Kaifa stepping in, over the decades, the lake had become highly silted and led to poor water retention, and groundwater levels had also gone down in the area surrounding the lake. All the channels leading to the lake were deeply silted as well, overgrown, somewhere in some places encroached, etc. So this group of people decided to start working around this lake. And so they started having conversations with people in the area. Initially, they were met with a fair degree of skepticism. People were not like, very, very open to the idea, or even, pretty cynical that anything would change.
But they continued to engage. They persisted. They engaged with various communities around that lake. Did, fair bit of conversations with them, etc. And then they began to get some buy-in into what they wanted to attempt. In fact, initially, as they felt, as they saw skepticism, the group of them pooled some money together, and then they started doing some work initially, even as they continued to engage and talk to people around. But soon enough, with that persistence, people said, okay, we'll help you. You guys have no experience. We'll help you at least understand the layout, what needs to be done, etc. So they started participating in this, and slowly that kind of grew. But it became quite, once a certain barrier had been broken, support started cascading in. And the public works department, they got permission, even though the public works department or district administration didn't actually do anything to revive the lake or provide any support as such in any way. They provided no obstacles, and they gave them the requisite permissions for them to do what they were suggesting they wanted to do. So again, I mean, the exciting thing about this was that when they needed more money, the amount of money that collected was grossly insufficient, because even to rent desilting machinery, etc., is quite expensive. So they actually ran a lot of very modern kind of campaigns to raise the level. They ran some contests and online people to participate. And the excited both mute kar dona, please. Only keep Arundhati on. Both in terms of helping with funds, but also general excitement around the project and people's willingness to participate in whatever way they could. It all went up, and that's what I found was sort of unique about this project, this particular project. So what did the revival actually involve? It involved clearing the source supply channels leading from the catchment area to the lake. Originally, some 4 kilometers were cleared leading up to the lake, and this had basically, like I think it happens in most places, it become a dumping place for rubbish. It had encroachment, etc. So, but not major encroachment. Solving the same problem in and around the city like Chennai would be far more difficult, because that's a level of like a real estate encroachment. That's not the scale of challenge they faced here, and so it was much easier. Once they cleared the supply channels, they also de-weeded, desilted, and deepened the lake to increase its carrying capacity. They now had equipment they could use. Then they fortified and expanded the boundaries of the lake. So they set up soil boundaries where they existed. They also planted vetiver, or I think it's khas in Hindi, but they planted vetiver plants all along the banks, the embankments, and the bunds to ensure that it would stay in place. And they also created islands within the lake area, and they planted saplings in them, because it's a fairly large lake. So what did this result in? In about 107 days, about 70% of the lake was restored. Anecdotally, basically before the work began, the groundwater level was, over historically, people there, the older people say, we would find water here at 40 feet, etc. But in recent years, that had gone down dramatically. At some places, it would be 300 to 400 feet, even going up to 800 to 1,000 feet, maybe even more in some places. And slowly, what they began to see over time was that and not such a long time also, that the groundwater level has improved quite a bit. Again, based on how things had gone, it had come back. It was not very 1,000 feet, but those are the ranges of levels up to which it came back. And their assessment is that the desilting and deepening of the lake has resulted in preventing a lot of water loss per year, which would essentially, if it hadn't been desilted and had not been deepened, that water essentially would have run off to the sea. And they wouldn't have access to it. The overflow system is also designed in such a way, and I think this is the traditional way it used to be long ago. The system was that the overflow, you get rain in the catchment area, the water comes to the lake, you have a supply channel that reaches the lake, then
when the lake overflows, when the lake gets full and it overflows, then you have another channel or another couple of channels that lead to other lakes. So you have this kind of cascading system. So you are storing as much water as possible before you let the excess go to sea. So that's what they've attempted here. And the rejuvenation finally was done at a cost of 32 lakhs. So for me, I tried to capture what I understood of why the Kaifa model worked, how it worked, and why it worked. So initially, I mean, it was, when we call it the community, these were a group of individuals who came, who were native to that place, but they didn't necessarily live there. But post the curriculum success, other people, how it's worked is that people approach them. It may not, I mean, when you say a community, I guess it's not a formal representative of a community, but someone who's heard about them and approaches them and says, hey, look, we would like to solve this in where we come from, in our village or our couple of villages. We would like, or we have this lake which we would like to revive. So that's how the initiative comes from people who want this to be replicated wherever they come from. They approach Kaifa, and then it could be so discussions happen, and it's a range of things that help could extend to. It could be, how do you do it? Like, how do you go about planning how to do this, right? To fundraising for it, because this is, a lot of it is I mean, it is actually entirely happening outside of the government scheme system, right? Or an NGO coming with money or whatever. It's entirely funded by people who are experiencing water depletion quite severely, who are paying quite a large price for it, who also want to do something which doesn't involve a lot of bureaucracy and red tape. So these are the kinds of people who are approaching and saying, hey, we're really enthused and we would like to try this out. So it starts with these conversations happening. So yeah, so this is one of the things that how it works. And the way, to some extent, a lot of this building has a lot of this absence of delays in red tape and also getting permission from government has been done with some, I would say, from my understanding, with some amount of political astuteness. So they don't just, and it doesn't make sense. The initiative comes from the community, and the community is, they try to rope in members who could also ease that to happen, because otherwise, without the buy-in of the local people who are actually in positions of power to give you that, it doesn't work. So in some sense, it's building that, once a group of people arrive and say, we want to do this, even that roping in from locally of people who are useful to this process happens, and Kaifa helps do that as well by having conversations. And that's how they've done a lot. I mean, they've managed in some 104 locations so far. Small lakes, not everything is as big. In fact, many are very, very small lakes and ponds and water bodies and channelways. But they've successfully managed to interface and get government permission and no government hindrance in most places. There's flexibility based on, I mean, simply by this, there's a lot of flexibility on the size, what is, what resources can be made available in that region, what are the specific needs and groups of that individual or group of individuals, etc. So there's a lot of flexibility on how much and what they can do with each of these initiatives. As I mentioned before, one of the strengths is innovative fundraising. So they've both fundraising as well as sort of propagating themselves have been really, really good at, because they really, they talk a lot about it publicly, they document stuff, they put it out there. Also, when you put things out there publicly, it's much more difficult to not be fully truthful about exactly what you're achieving and what you're doing. So it's, a lot of people have been enthused by what they're seeing. They visit, of course. And so some companies have actually stepped in and helped them by giving them equipment for doing dredging and desilting. So the group then takes it to whoever approaches them. They help them. They sort of take this machinery there, and they help with all the desilting process, etc. In Tamil Nadu, in fact, there's a dairy company that's locally based that's been very interested in doing this, and they have actually contributed with the JCBs and all. They don't interfere in any other way. They basically they give them the equipment. They've donated the equipment as CSR, and these guys take it to whoever approaches them.
The other thing that they've been doing is actually mentoring of youth groups in those areas. So that's part of the process in some sense, right? It involves taking detailed conversations about understanding what the history of that lake, the geology of the place, the study of rainfall, what is the native flora and fauna, inspect. So they do a whole bunch of these things, and they've managed to get people with various kinds of expertise to be part of the process. And the critical role that these youth groups play actually at the moment is post the implementation as well, which is essentially the way they understand it now. The desilting is not something that will happen annually. They're thinking of it more. It all, of course, depends on the size of the lake or pond or whatever, but it could be 2 years, it could be 3 years. In some very big lakes and water bodies, it could be 5 to 6 years, is their understanding. And what the youth do is ensure, because it's, I mean, in some sense there's a sense of ownership, there's a community ownership, because you've all raised funds amongst yourselves as well as outside, to sort of ensure that it doesn't become a dumping ground, it doesn't become encroached. So that in some sense, because you've initiated it, or you've paid for it and you've participated in implementing it, all these things give a sense of ownership, which is why there's much more incentive to not, to ensure that it's sustained. The way Kaifa sees it, they're maintaining, of course, a list of everything that they've worked on. The way they see it is they've seen different levels of enthusiasm in the different places they work. There are places they know that will go ahead and do the desilting and maintenance on their own without even approaching Kaifa again. And there are places that will need to be reminded, and will, again, their sense is that they will participate again with the with Kaifa, and do it again when the time comes to maintain it, or do the process again. And then of course there are others who will have to be prodded and pushed much more. So there is that. One of the things that work for them, because a critical component of this is also expenditure, right? So one of the things that has worked for them is they're very transparent about funds that come in and expenditure, and they put this data out very regularly. So on WhatsApp groups that they have, etc. And if approached, they will also give those details. So there's a sense of people who've given, also knowing that they are getting updates on what's happening, how it's being used, etc. They're very good, like I've mentioned again and again, with modern tools of engagement. So they're there in social media and all, in all the social media platforms. They appear on radio shows, etc. And so the reason why this is important is that because they're able to talk about their work, there are people who visit them much more, and people who are more interested in, especially since it's becoming more and more difficult, water is becoming a more and more difficult commodity to access, to have, to be able to use. It's expensive. If you have to buy it, more and more people are interested in doing this themselves. It also feels accessible to them, because it feels like they can replicate it themselves without having to approach anyone. So their processes are documented and, present. So what did I take away from the future of this was that it's gained traction and inspired replication. There are many examples. If you go online, you will see as well, and evidence of them having done this, etc. in other districts beyond the Delta now, and they've even been approached by people in other countries, other states in India. Not huge number, but enough for it to be interesting that other people are taking notice and seeing some initial value to it. It'll only time will tell, because also one must be aware that this is a fairly new, it's since 2018 when the cyclone hit. It's that old, and at the moment it's going at a great pace. It's they're like every week, every other week, you will see some new work being done, some new people asking, approaching to say, okay, one small pond, one small lake in their village. We'll have to see how it gets sustained. And part of that is to actually the structures, formal. At the moment, there are no formal structures, but the informal structures that are in place, we'll have to see how they remain effective and energized to continue to do this. And the other key thing that for me, this group has not thought about at all, which in Maharashtra, the case study, or
they clearly talked about the big side of this is demand side management, which is not being thought about at all. So you can, I mean, this will help in recharge of groundwater, but unless we actually um, um, look at demand side management much more closely and more seriously, this alone cannot be a solution to the crisis, is my understanding. Thank you, Arundhati, for such a wonderful case study from Tanjavur district, meaning how dedicated, committed people can, bring wonders. Thank you for that case study. Now let's go to West Bengal. In West Bengal, an organization called Prasari has been helping us in this project. This organization is doing a lot of projects on water resources in all over the state, West Bengal. So I'll ask Rajdeep. He's doing this project along with his colleagues Poonava, Sekhaji, and Piyush Jaina. But Rajdeep will present case studies from West Bengal today. So over to Rajdeep. Okay, then. So I welcome you all to the presentation on the whatever we have done in West Bengal in 4 different agroclimatic zones in the vertical of groundwater management. So in West Bengal, we are working in 4 different agroclimatic zones, which are northern hills and at the extreme north, which is zone 1. It comprises of 2 districts, Darjeeling and Kalimpong. The zone 2 is the Himalayan foothills, which comprises again 2 districts, Alipurduar and Jalpaiguri. Zone 3 is at the western part of the state, which is the red lateritic zone, covering almost 6 districts of the state, which is adjacent to Jharkhand and Odisha. And zone 4 is the coastal Sundarban, which is a part of the largest delta in the world, which is again covering 2 districts, north and south 24 Pargana. So in those, West Bengal is a state where one can find from the Himalayas to the sea beaches, and in between there is a lot of different agroclimatic and agroecological zones, and we have been working in in these 4 zones. Now I will start with the zone 1. This is the northern hills. It's a very fragile ecosystem which adversely impacted. The ecosystem is adversely impacted by the recent developments. In last 40 or 50 years. This area is mostly dependent on natural springs, which are generally points of groundwater discharge. And actually, there is no estimation that how many of the perennial springs are there, but we have roughly estimated that there are near about 4,500 natural springs. Okay, so these springs are getting dried up in last few decades due to some various reasons like climate change, then change in the land use and land cover pattern in the recharge area, and the subsequent development, and also some seismic activity. So in this region, if we want to show the water crisis, I will show some examples of villages. Like this is a village called Kashion village, the Kashion Gram Panchayat of Kalimpong 2 block, where 23 households depend on a spring called Sepai spring. And we have the data of 3 different seasons, where you can see in the summer season, the demand is much higher than the availability of spring water. So during this time, people have to face acute water crisis. And the story is quite similar in many other villages, where in late winter or in early summer, people generally suffer for water availability. So what we have done here, we are doing springshed management in a watershed approach. Means we have delineated some watersheds, micro watersheds, which are normally 400 to 700 hectares, and located all the springs within the watershed. Then in each individual spring, we do some
series of activities, which starts with the community forming water users association. Most of these associations are registered bodies, and then these water users association nominates some parahydrogeologists. We call them Dharasevaks. These Dharasevaks are trained on basics of hydrogeology and water resource management, and then we do some participatory transect work and hydrogeological survey of the spring shed area, and that all the observations and all the local knowledges whichever is available in the village, we try to summarize in a hand-drawn diagram of the local hydrogeology for that particular spring. And then all the geolocations are plotted in the Google Earth in order to identify the recharge zone. Then subsequent gradually participant planning is done, and gradually execution is done leveraging resources from different government programs like UNREJ and ADMIP program of which is a World Bank funded program is done by the Water Resources Department. So this is the steps which normally follow in any spring shed, and this is a conceptual diagram of a particular spring shed area called Simsat Dhara in Boruvatan block, where you can see that there is a deposition zone, means it's a old landslide area where spring is coming out of a loose material. So we have categorized it as a depression spring, and we have also identified the recharge area, which has been plotted in the Google Earth. So in that particular recharge zones, we do some recharge activities, mostly with area treatment measures like different kind of benches and bunds, along with some land shaping models like bund, bench terracing, etc. So this is in a nutshell what about our spring shed activity, which is a collaborative initiative with the Panchayat and Rural Development Department and also the local and territorial administration. So I will now move on to the second zone 2, which is the foothills. That means it covers the Duars and Terai region of Jalpaiguri and Alipurduar. This area receives a lot of rainfall. The average rainfall is somewhere around 3,200 to 3,500 millimeters per annum. Despite of that, this area suffers from water crisis, especially during the lean period. So, if we look at this picture, it's a product of a PRS session where villagers, where we actually try to manifest the villagers' point of view, community's point of view, and they have prepared this comparative map where a same village in a 20 years apart, how this village has changed in terms of natural resource. Before 20 years, there used to be a lot of forests, and there were few households and wells. And now the population has increased, gradually the forest has decreased, and you can see they have also depicted the groundwater level. Now it has gone down to 30 to 40 feet. Still it's a shallow aquifer, but it is going down gradually. So this shows the crisis or the trend of depletion, groundwater depletion in that area. Now this is a conceptual diagram. Basically, this Duars region has 3 different sources of water. One is springs at the foothills area. Second one is there are some well-dependent villages, open well-dependent villages, and at the south there are some tube-well-dependent villages as well. So all these sources have seen some degradation over time due to different reasons, and we are trying to rejuvenate these sources through identifying the recharge zone, specific aquifer recharge measures through identify local recharge zones, and increase the groundwater level. Now this is a conceptual diagram again, which has been prepared by the barefoot hydrogeologists in the village, which helped us to understand the local hydrogeology. Along with that, also we have been doing this static water level measurement, well monitoring, and it is done once in every month for last 3 years. Now this static water level data is analyzed and used to determine the groundwater flow direction, so that we can determine the where from the water is coming and where it is going actually. This is how we analyze the groundwater, the static water level data
to form this groundwater contour map. And in this way, we normally identify the recharge zone, where we uh, uh, and analyzing the characteristics of a recharge zone, we determine different kind of recharge activities. So if it is the workable land, we do some instead of recharge water harvesting structures like the different kinds of pits and bunds along with rigid measures. And the area falls under any habitation, we go with the rooftop rainwater harvesting. So this is the zone 2. Zone 3 is the red laterite zone, which is at the western part of the state, which is the driest part of the state. And again, you can see this covers almost parts of 6 districts, and which contributes to 7 major river basins. At the extreme north, there is the Mayurakshi River basin, where the red circle is there. I'll give a small example from this area. So this is at the border of West Bengal and Jharkhand, and this Vishwari River, small second order stream is there, which contributes to the Mayurakshi River. And in this basin, we have identified a watershed which contributes to a primary first order stream. We call it Gurujondhi micro watershed. So we have formed women institutions, women livelihood committees in these areas, who normally help us to identify the resources, to map the resources in scaled revenue shades. Mostly we identify land, water, and plant-based resources, and also we do some well monitoring like other areas through well-trained monitoring network. And again, the static water level data is used to prepare the groundwater contour map, which is plotted on the Google Earth image, so that we can identify the recharge zone. In this case, the groundwater flow direction is actually following the surface slope, terrain slope. So there is no difficulty in this watershed, and we planned different rainwater harvesting structures, soil and moisture conservation structures in recharge zone. Like in the habitation area, we went with rooftop water harvesting, and in the forest and in the upland areas, we went for different soil and moisture conservation measures along with plantation programs. And there are some water harvesting structures in the medium upland, and some drainage and treatments are also there. So this was the story from third zone, that is the western zone. And now we'll move on to the fourth and last zone, which is the Sundarban zone. Now this is the most complex region of the state, where many of the areas are actually lying below the mean sea level, and the surface slope is very minimal. So this area suffers from inundation and salinity all the time. And this area also is a climate vulnerable area, where in every 2-3 years it is stuck with some cyclones. Well, in the last 2 years, 3 different cyclones have hit this area. So we started working in this area to address or to combat the salinity and water leaking problem with different types of land shaping models. And finally, we came up with this 5 square model, which helps to leach out the salinity from the elevated land through interconnected channel of field canals, basically. So we call it as a typical valley to ridge approach. Unlike the watershed, where we follow the ridge to valley approach, in this case we start doing the activity from the outlet side, from the valley bottom side. Because whenever salinity from a particular land is drained out, it gets stored in the next block. So we have to make sure that this salinity doesn't affect the surrounding lands and get directly passed into the canals, which are with sluice gates. So this is how we do this 5 square model in a valley to ridge approach. This is a contiguous treatment patch from Kuragate Gram Panchayat of Sendusari 2 block of North East Bengal district, where
this is the sluice. It is the sluice gate of the canal which I was talking about, and these are the 5 square models which we have prepared, and all salinity from the surrounding lands are drained out with the help of these canals, and it goes to the river through this sluice gate. So this is how we try to combat the salinity and waterlogging problem in Sundarban. But uh, simultaneously, we also try to explore the groundwater realities of that area. Because Sundarban is area surrounded by water, but which is of no use. So people have to depend on groundwater for survival, like for anything. So this was a PWM program which was conducted along with Aquadam in 2015 to 2015 to 18 in the Kurahate Gram Panchayat, where we could identify one shallow unconfined aquifer which is saline, and 3 confined aquifers at different levels. The first confined aquifer is at 340 to 450 feet. The second aquifer is at 571 to 700 feet, and the third one is at from 880 to 950 feet. So actually, we were struggling to find any solution for this region, and that is how we started an initiative called Aquifer Storage and Recovery System, which is basically still now it's on pilot mode, and basically it's a mathematical simulation of injection and recovery site, where normally sweet water stored in any harvesting tank or square model are mechanically injected through with the help of 2 HP centrifugal pumps for almost 100 days, and from the 50-day onwards, due to the density variation in between the saline water and the sweet water, it creates a bubble within the water, within the aquifer, the unconfined saline aquifer. And it can remain as a bubble without intermixing for at least 100 days. So this water can again be extracted and used during the dry spell, or even during the floods or cyclone period, when sweet water is normally a rare thing. So on this technology we have started working. We have started injecting the water. So I hope this summer this will be the first year of injection, and let's see what happens. We are really hopeful for this model. So this was all from our side. So from all these 4 different agroclimatic zones, and in all agroclimatic zones, we have started working with the government in large scale. For the spring shed, we have worked with the PNRD in a project called Jharna Dhara, and also with the Water Resources Department. In the West region, we have started working with the district administration in a special program called Sanjeevani. In the western part, we are working in Kushan Mukti, which is a watershed-based river rejuvenation program. And in the delta, we are working in Deepanjali program, which is basically an NRM program to address the salinity water logging and also to improve the groundwater status of Sundarban. Thank you राजदीप जी बहुत क्लियरली ये बताने के लिए कि विद इन अ स्टेट हमको हमारी कितनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को देखते हुए हमको जो लोकलाइज सोल्यूशन है, लोकल एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हैं, वो भी वेरी होते हैं. तो आपने 4 अलग अलग प्रकार के रीजन बताए और उनमें किस तरह के वेरिएशंस हैं, और उसके उनकी वजह से जो है वहाँ की जो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हैं उसमें भी डिफरेंसेस होता है. तो थैंक यू फॉर दैट. नाउ we'll go to Deepak Sharma ji. He's doing this study in Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. He's a very experienced expert in groundwater resources, and we'll listen from him now. So Deepak ji, over to you. सभी को नमस्ते. तो मैं जो प्रस्तुति यहाँ दे रहा हूँ वो बेसिकली डिमांड सप्लाई सिचुएशन के रेफरेंस में देने का कोशिश कर रहा हूँ, और जो थोड़ा सा पहले स्टेट्स की सिचुएशन को हम देखेंगे, उसके बाद जो एग्जांपल्स हमारे पास आए हैं उनको कैसे हम आगे देख सकते हैं उसकी देखते हैं. तो जैसे अगर हम ये देखते हैं कि तीनों स्टेट राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को और
इंडिया के रेफरेंस में अगर हम देखें तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे एरिया के रेफरेंस में हमारे पास वाटर अवेलेबल फ्रॉम रेनफॉल जो है वेरिंग है, और पंजाब में जैसे 39 विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ इंडिया थिंग, जो है रेनफॉल से मिलने वाला, जो बाकी इंटर बेसिन ट्रांसफर होता है दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। सो इन ये जो रेनफॉल है और इस रेनफॉल की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उसका हमने कोशिश किया है कि जानने का कि कितना हो सकता है, दैट इज 5.75 इन पंजाब, 9.06 FBCM in Rajasthan, then Uttar Pradesh. So reference to this, then other recharge, if we move towards the how much water we are taking out, annual groundwater draft, we find that the recharge from rainfall and other recharge together, annual replenishable is 35, while we are taking out in Punjab, it is 34. BCM. Then in the Rajasthan, we are only recharging 12, while we are taking out 15. In Uttar Pradesh, definitely we are recharging little more than what we are taking out. But in India, it is around some 45%. So if you take percentage wise, if you move towards, then we find that in Punjab, the situation of stage of groundwater development is 164%, while in case of the Rajasthan, it is 150%. In case of Uttar Pradesh, it is 68%, and in India, it is 62%. So it is the balance, the development of the, when they call it groundwater development, it is the quantity percentage which we are actually using. So the blocks which are under the different categories of development, we find that Rajasthan and Punjab are the top in case of the overexploited blocks, while in case of the Uttar Pradesh, it is the safe zone or safe groundwater blocks are more in comparison to, और इंडिया में अगर हम देखेंगे तो वो भी वहाँ भी थोड़ा स्थिति बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है एज कम्पेयर टू राजस्थान और पंजाब का। तो अगर हम इसको उस रेफरेंस में देखने की कोशिश करें कि भाई ग्राउंड वाटर में सप्लाई साइड को मैनेज करने के लिए क्या स्थिति बनती है और कौन सी एक्टिविटीज बनती है, और रिड्यूस एक्सट्रैक्शन के लिए क्या स्थिति बनती है, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टाइम और स्पेस का फंक्शन के रूप में देखना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल वो इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दूंगा उन एग्जाम्पल्स के रेफरेंस में हम देखेंगे। जैसे रिड्यूसिंग डिमांड जो है वो तराई रीजन ऑफ पंजाब एंड तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश का देखते हैं, तो वहाँ ऑप्टिमाइजिंग यूज करने के लिए एग्रीकल्चर में ऑप्टिमाइज यूज करने के लिए काम किया जा रहा है, और एग्जांपल्स आते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन भी बनता है और ड्राई पीरियड का भी सिचुएशन बनता है। वहाँ स्थिति थोड़ी सी इस तरह की है कि 4 महीना फ्लड है तो बाकी टाइम में उस स्थिति में वाटर लॉगिंग है इस महीने में, तो बाकी समय में पानी की कमी है। ये जैसे बलरामपुर है, गोंडा है, उधर सिद्धार्थनगर है और इधर महाराजगंज है ना। तो वहाँ पानी फाउंडेशन करके एक संस्था है जो कि बेसिकली काम कर रही है इस विषय पर कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में महिलाओं को तैयार करते हैं, और वो एग्रीकल्चर में पानी के कंजम्पशन को कम कराने का बात है। क्योंकि हम अगर पूरे देश की स्थिति में देखते हैं तो ये देखने में आता है कि वाटर यूजिंग जो है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही। तो हम अगर मान लो डोमेस्टिक फ्रंट पर काम करते हैं तो उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नजर नहीं आने वाला। ये जो है पानी फाउंडेशन का एक सोच रहा है, और इस आधार पे उन्होंने जो है वाटर डिमांड को कम करने के लिए उधर काम करने की शुरुआत की है। उसी तरह से हम अगर देखते हैं तो पंजाब में खेती विरासत जो है वो वाइड स्केल नॉलेज बिल्डिंग के माध्यम से इस चीज को करने का कोशिश कर रही है कि पानी के उपयोग को कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पंजाब में एक सिचुएशन और अलग है कि वहाँ आधा हिस्सा जो वाटर लॉगिंग वाला है, एक कैलकुलेशन एक जगह मतलब स्टडी के दौरान ये भी आ रही थी कि पंजाब का जिस हिस्से में पानी की कमी है और जिस हिस्से में वाटर लॉगिंग है, तो अगर वहां पर पानी का मैनेजमेंट इस तरह से किया जा सके कि लॉगिंग वाला जो पानी है उधर जा सके, लेकिन वो इसलिए प्रैक्टिकली संभव नहीं कि शायद जो है स्लोप को लेकर के और फ्लो को लेकर के ये बात आएगा। लेकिन क्वांटिटी वाइज ये कैलकुलेशन आती है कि लगभग 70% ऑफ द डिमांड
which is exactly taking out the more and more groundwater can be made through this water logging, logged water in the other regions. सेंट्रल एक जो स्टडी जो डिमांड रिड्यूस करने का जो हमारा एक एग्जांपल आया है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आया है, और वो आया है जो सेंट्रल में उन्नाव और कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं, उन लेदर इंडस्ट्री में कुछ जो मतलब अच्छी इंडस्ट्रीज हैं और जिन्होंने मतलब थोड़ा अच्छा काम किया है वाटर ऑडिट को लेकर के, वो वाटर ऑडिट के माध्यम से वाटर ऑडिट करके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल अप्लाई किए हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल अप्लाई करके और लगभग अपनी इंडस्ट्री का 60% वाटर जो है उसको सेव कर पाए हैं। तो ये एग्जांपल अपने आप में पॉलिसी इम्प्लीकेशंस के लिए सामने आता है कि इंडस्ट्री में कैसे हम डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं। उधर एग्रीकल्चर में जो है पानी फाउंडेशन और खेती विरासत के जो एग्जांपल्स हैं वो इसको सामने लेकर रखते हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जो कि 2 पानी के ग्राउंड वाटर के बड़े कंज्यूमर हैं, तो उनको हम कैसे इस क्वांटिटी, इस वाटर को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इधर जाते हैं इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर के, तो हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और बुंदेलखंड में इसे आता है वो तालाब अभियान के माध्यम से, जहाँ जो है कई सारे तालाबों को रिवाइव किया गया। वो जो एमपी में भी, जहाँ पर अभी एग्जांपल बात आ रहा था कि एमपी में जो टीकमगढ़ वाला एरिया, वो जो कि शायद इससे मिलता पड़ोस में ही है, और वहाँ भी इसी तरह के अभियान भी हैं। तो ललितपुर, महोबा, ये जो इलाके हैं जो कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन और रिवाइवल ऑफ विलेज पोंड के माध्यम से और कुछ आर्टिफिशियल रिचार्ज एक्शन के माध्यम से, कुछ जगह पर वाटरशेड के माध्यम से ये जो है रिजुवनेटिंग रिवर्स फ्लोज को किया जा रहा है। और ये एग्जांपल्स वहाँ पर 2, जैसे बुंदेलखंड में 2 नदियों के ऊपर काफी अच्छे से काम हुआ है। बुंदेलखंड सेवा समिति प्लस अदर वहाँ पर अभियान भी हैं जो इसमें काम करे हुए हैं, और राजीव गांधी फाउंडेशन भी इसमें जुड़ करके शायद इनके साथ में काम किया है काफी, और दूसरे पार्टनर भी हैं जो बुंदेलखंड में इस पे काम कर रहे हैं। पंजाब में जो है यूनाइटेड ब्रेवरीज ने जो CSR के रूप में टेरी के साथ मिल करके, और सेंट्रल एरिया में लुधियाना और पटियाला में जो विलेज पोन्ड्स हैं उनको रिवाइव करने के काम किए, प्लस उनके साथ में एसोसिएटेड रिवाइवल ऑफ पोन्ड प्लस जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सेपरेट स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने का भी काम किया जा रहा है। और उसी तरह अगर हम देखते हैं तो जो राजस्थान में इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चले हैं, उसके अंदर साउथ राजस्थान में 12-15 CSOs के साथ में मिल करके और वाटरशेड डेवलपमेंट का काम किया गया, जिसकी वजह से जो शेलो वाटर जोन है, जिससे कि कहें कि अपन डायनामिक वाटर लेवल है, उसमें बदलाव आया, उसकी क्वांटिटी में बदलाव आया है। पर अभी ये देखने में आया कि वहां पर चूंकि इसको उस पूरे नजरिए से नहीं देखा गया, तो वहां वाटर लेवल तो बढ़ गया, लेकिन यूज करने वाली मतलब जो है क्या कहना चाहिए कि तैयारी नहीं हुई। तो वो जो डायनामिक वाटर बढ़ा है वहां पर, वो जो है नीचे के जोन्स को मदद कर रहा है, लेकिन वहां की कम्युनिटी को उतना सपोर्ट नहीं कर पाया है। इधर जो है जैसे अगर हम राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, तो वहां पर अंबुजा सीमेंट ने लोगों की छतों के पानी को जो नीचे ले जाने का, ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने का काम किया है। उधर डांग एरिया में और साउथ राजस्थान में ग्राम गौरव संस्थान और प्रयत्न समिति जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो कि कंजंक्टिव यूज ऑफ वाटर पे काम कर रही है, जो कि तो उसमें कंजंक्टिव यूज में ग्राउंड वाटर को इनहेंसमेंट का भी साथ काम हो रहा है, प्लस साथ साथ वहां पर जो है उसके यूज का भी काम हो रहा है, जहां पर कि शायद अगर जो रिड्यूसिंग वाटर डिमांड इन एग्रीकल्चर पे भी अगर हो जाता है, तो ये फिर डिमांड और सप्लाई दोनों को ज्वाइंटली एड्रेस करने का कोशिश करेगा। अगर हम जैसे उस जो मैंने एग्जांपल बताए उनको अगर हम स्टेट लेवल के उसमें देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, तो जो स्ट्रक्चर्स या जो पानी फाउंडेशन जो है, पानी संस्थान जो यहाँ काम कर रहा है, वो बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोंडा, इस इलाके में जहाँ पर की वाटर लॉगिंग कंडीशन भी होती है, और साथ ही साथ पे वाटर का डिमांड जो है विंटर सीजन में और समर सीजन में ग्राउंड वाटर पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बुंदेलखंड का जो रीजन है, जहाँ की पानी को या पानी तालाब अभियान के माध्यम से और पॉन्ड्स रिवाइवल के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हुए और उस एरिया में स्ट्रीम को रिजुवनेट करने का काम किया जा रहा है। तो जो सेंट्रल पोर्शन है, जहाँ पर कि एक्चुअली अभी उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, पर
फिर भी इन इंडस्ट्रीज ने खास तौर पे पानी की बढ़ती हुई कॉस्ट को देखते हुए अपना काम किया है, जो कि शायद अल्टीमेटली हमारे मतलब जो है ग्राउंड वाटर की यूज को रिड्यूस कर रही है। तो क्योंकि इंडस्ट्रीज का कंसर्न जो है कॉस्ट था, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट हमको इसमें ग्राउंड वाटर के क्वांटिटी के रूप में सामने आ रहा है। फिर अगर हम पंजाब के रीजन्स को देखते हैं तो पंजाब के रीजन्स में जैसे कि ये सेंट्रल पोर्शन है, जो कि जहाँ पर किसी स्थिति ज्यादा गंभीर होती जा रही है, और जो ये वाला जो पोर्शन है आपका फाजिल्का अबोहर की तरफ वाला, जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग की वजह से सिचुएशंस अदल बदलती जा रही है। तो अगर हम पंजाब में देखते हैं तो कंडी एरिया में रिचार्ज वाटरशेड एक्टिविटीज के माध्यम से किया जा रहा है। आर्टिफिशियल रिचार्ज, रिवाइवल ऑफ विलेज पॉन्ड, जो कि यूनाइटेड ब्रिवरीज और टेरी के एग्जाम्पल्स वहाँ सामने हैं, जो लुधियाना में और पटियाला में उनके एग्जाम्पल्स हैं। इधर रेस्ड बेड अप्रोच, जो खेती विरासत ने वहाँ पर कुछ जो है काम किया है, ताकि इस जो आपका क्या कहना चाहिए कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में अपनी खेती को कैसे वो करें, लेकिन वो ग्राउंड वाटर को उतना ज्यादा इम्पेक्ट डायरेक्टली नहीं करता है। लेकिन पूरे पंजाब के अंदर जो है खेती विरासत का ऑर्गेनिक फार्मिंग अप्रोच जो है वो वाटर डिमांड को रिड्यूस करने का काम करता है। वो मतलब परंतु साइंटिफिकली कितना क्वांटिटी हो रहा है वो अभी संस्था के पास में उस तरह का मतलब कैलकुलेशन या स्टडी नहीं है। अगर हम इसको राजस्थान के रेफरेंस में देखने की कोशिश करते हैं तो राजस्थान में जैसे कि जो एग्जांपल्स आए हैं कि वेस्टर्न राजस्थान का जो पोर्शन है, डेजर्ट वाला एरिया है, जहाँ पर कि पार प्रबंधन या पार, वहाँ पर एक तरह से जो ऊपर थोड़ा सा ग्राउंड वाटर होता है, जो कि अपर जोन में फर्स्ट जोन के अंदर मिलते हैं, और वो 100 फीट तक के आसपास के जोन है जहाँ पे पीने के लिए पानी को आमतौर पे वो लोग यूज करते हैं। वहां पर उसको मैनेज करने के लिए लोकल वेजिटेशन को रिमूव करके और सॉइल के अंदर पानी को कैसे सेव करें उसको वो लोग करते हैं। फिर इधर जो अंबुजा सीमेंट का जो एग्जांपल आया था कि भाई जो अलवर वाला एरिया जहाँ पर कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का, और 100,000 फीट के आसपास या 800 फीट के आसपास जहाँ पर वाटर लेवल पहुंच गया है वहां पर, और ओपन जितने भी वहाँ ओपन वेल हैं, काफी बड़ी संख्या में पुराने ओपन वेल हैं जो कि डिफंक्ट हो गए। तो वहाँ ये छत का पानी को जो है इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, क्योंकि अलग से नया स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बजाय इन स्ट्रक्चर्स को यूज किया गया और उनको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम किया जा रहा है। और डांग एरिया में एक कंजंक्टिव यूज की बात आती है, जहां पर कि मतलब पहले ऊपर एरिया में पोखर बना करके, नीचे एरिया में पाल लगा करके, और फिर छोटे छोटे शेलो मीन्स ज्यादा से ज्यादा 15 से 20-30 फीट 18 फीट इस तरह के वेल्स बना करके, और जो पानी थोड़ा चला गया नीचे उसको ऊपर जो अपर जोन में है, जो डायनामिक में उसमें मूवमेंट में है, उसको यूज करने का बात है। इधर जो सेंट्रल वाला जो पोर्शन है जहाँ पर कि पॉन्ड रिजुविनेशन की बात आती है और जोहड़ की बात आती है, तो वहाँ जो वहाँ भी अंबुजा सीमेंट और अदर जैसे श्री सीमेंट, दीज ऑल सीमेंट फैक्ट्रीज आर आल्सो अराउंड देयर, so they are working on the rejuvenation of the pond structures. In the southern portion कुआ परिवार और वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट जो है उसके टेक्निक्स को अपना करके वहाँ पर ग्राउंड वाटर के ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये तीनों स्टेट्स में हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ग्राउंड वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए जो है डिफरेंट, जैसे कि जो रिचार्ज वाला जोन है, रूफ रेन वाटर रिचार्ज वाला जोन है, वहां पर एल्यूवियल या सॉफ्ट ग्राउंड वाटर के रेफरेंस में देखें तो वहां पर की सॉफ्ट एक्वीफर हैं जहां, और अगर इधर हम वाटरशेड और जहां हो रहे हैं डांग वाला जो एरिया है और जो पार वाला एरिया है, इधर में पार वाले में थोड़ा कुछ एरिया है जो हार्ड वाक और उसका है, हार्ड रॉक एरिया है, अदरवाइज वहां पर भी एल्यूवियल एरिया है। सदर्न में हार्ड रॉक एरिया है, परंतु ऊपर चूंकि फ्रैक्चर्ड और वेदर जोन में जो वाटर अवेलेबल इकट्ठा होता है वो वाटरशेड एक्टिविटीज के माध्यम से वो लेवल बढ़ जाता है, और उसी को कम्युनिटी यूज करके और अपनी आजीविका को, तो उनका जो एक तरह से देखा जाए तो कुछ जैसे सेवा मंदिर और कुछ संस्थाएं यहाँ हैं जिन्होंने कि छोटे छोटे वाटरशेड लेवल पे वाटर बैलेंस ऑडिट या वाटर बैलेंस शीट बनाना शुरू किया है, और जिसमें कि भाई टोटल रेनफॉल से इतना पानी आएगा। जी, हरिओम।
हाँ जी, बीसी अदर जोन में से बोलो। इतना आएगा, अच्छा है ना? ठीक है। वो तो इनका जो सीमा जी का पोता है ना, तो उसका नाम मैं भजन के लिए दे रही हूँ। क्षमा जी अपना नहीं तो हाँ, भजन में तो म्यूट कुछ कर लीजिए नहीं क्षमा चाहिए, जी। पर पता नहीं वो लोग अलाउ करेंगे कि नहीं। अभी पूछ अच्छा। लेना अरुण, रुचि से म्यूट बात कर दो। करके, क्योंकि नए नाम नहीं ले रहे थे वो लोग, पर हम लोग पुश करेंगे क्योंकि वो तो ये कुछ डिसेबिलिटी में तो कुछ फोटोग्राफ्स खास करने हैं की जरूरत नहीं है जो ना। बेसिकली हाँ जी। महाराजगंज से आ रहे हैं। क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी के साथ है ना, वो लोग अपने आप डायरेक्ट बहुत ज्यादा ये। अरुण प्लीज म्यूट क्षमा जी। हाँ, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि महाराजगंज में पानी संस्थान के द्वारा किए गए हैं। वहां पर जो जैसे रेस्ड बेड के माध्यम से ऑनियन की कल्टीवेशन, और ये पूरा जो प्रोसेस किया जा रहा है, ये जो वहां पर महिलाओं को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में डेवलप किया गया, और वो फिर जो है जैसे SRI है या रेस्ट बेस्ड अप्रोच है, या जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वाटर सेविंग में वहां मदद कर सकती है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द वाटर लॉगिंग सीजन, जो कि उनको खेती में पानी लेकर के आने में मदद करती है। और दिस इज एन एग्जांपल दैट कितना पानी बचा है, ये वहां पर वो अपने हर ग्रुप के साथ जिनके साथ चर्चा करते हैं उनके साथ ये एक्सरसाइज करते हैं कि भाई हमने कितना पानी, कितना क्यूबिक मीटर पानी हमने वहां पर बचाया है। तो ये एक्सरसाइज जो लोगों की अवेयरनेस में काफी मदद कर रही है कि वो कैसे इन चीजों से बच करके आगे आए। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये जो वाटर रिचार्ज की जो या जो क्वांटिटी बढ़ाने वाले जो उदाहरण है, तो जैसे ये जो टेरी के द्वारा जो एक गांव में पॉन्ड रिनोवेशन का काम किया गया, और ये डांग एरिया के, राजस्थान के डांग एरिया, ये पंजाब एरिया का था, तो यहाँ पर ये राजस्थान के डांग एरिया में जो छीड मैनेजमेंट करते हैं, जहाँ पर कि आपका सरफेस और ग्राउंड वाटर को ज्वाइंटली कंजंक्टिव यूज के रूप में कैसे देखा जा सकता है। यहाँ पर हम पूरा वेल देखेंगे, ये नीचे पूरे वेल बनाए गए हैं, लेकिन ऊपर जो है हर जहाँ से ऊपर के रीजन में पानी को हार्वेस्ट करके इसको ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया गया। तो जैसे कि अभी आप सुबह बात कर रहे थे कि मेकिंग विजिबल इनविजिबल, sorry, making invisible visible. Here it is a different approach, that is making visible first invisible and then using it as a visible. So that is what is they are following. This is the एक छत का पूरा पानी को कैसे कन्वर्ट करके और जो है यहाँ पर एक ओपन वेल में लाया गया। ये एग्जांपल अलवर जिले से आता है, जो अंबुजा सीमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है, और अभी शायद उन्होंने लगभग 100 लोकेशंस पे इस तरह के वो किए हैं, और ये शायद 1-2 साल में हमको क्वांटिटी के रूप में भी काफी वो मिलेगा कि, और इसके जो पास के कुएं हैं जहाँ पर ये चेंज को ऑब्जर्व करने का काम किया जा रहा है। तो ये है जो नेगेटिव एग्जांपल, जैसे कि जो नेगेटिव प्रोग्राम्स कैसे ग्राउंड वाटर को रीच वो करते हैं, हर्डल कर सकते हैं, ये है जो राजस्थान में काफी बड़े लेवल पे और शायद महाराष्ट्र में भी एक बड़े लेवल पे किया जाता है, और वो है कि फार्म पॉन्ड। और फार्म पॉन्ड में लाइंड कर, चैनल लाइंड करके और पानी को नीचे जाने से रोक दिया जाता है। तो अगर हम ग्राउंड वाटर के रेफरेंस में देखते हैं तो दिस इज अ प्रोग्राम विच इज निगेटिवली अफेक्टिंग दी होल ग्राउंड वाटर रेजिम। तो मेरा मतलब मूल रूप से जो प्रेजेंटेशन है वो इतना ही है, और इसके बाद जो भी साथी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं। थैंक यू दीपक जी। आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज था 3 स्टेट के अलग अलग लोकलाइज सॉल्यूशंस को बहुत कम समय में बताना, और आपने वो सब सिंपली बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। थैंक यू फॉर दैट। अब हमारे पास 2 और प्रेजेंटेशन है। एक दीपक योगी है गुजरात DSC संस्थान से, जो गुजरात और MP में काम कर रहे हैं, और हम पहले उनके पास जाएंगे एंड देन उसके बाद हम आसाम की टीम के पास जाएंगे। तो पहले दीपक योगी आपके पास। सभी लोगों को नमस्कार। हम DSC डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर की तरफ से हम लोग मध्य प्रदेश और गुजरात वी आर कंडक्टिंग दिस फील्ड स्टडीज, एंड me and my colleague Kaushal is going to present about the study which we have conducted in the field. So I will just invite Kaushal to begin the presentation. Hello. Kaushal, please. Hello. Hello.
जी आ रही है कौशल आपकी आवाज? कौशल जी, हाँ कौशल। ओके, थैंक यू दीपक सर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज की लोकलाइज्ड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एंड द रेगुलेटरी सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे अगर हमारा स्टडी एरिया हम देखते हैं तो हमारे पास मध्य प्रदेश था और गुजरात था। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास खंड, तो हमारा जो स्टडी एरिया था वो हमें दो असाइन हुए थे, एक तो मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे पास खंडवा डिस्ट्रिक्ट थे, धार डिस्ट्रिक्ट। और गुजरात के अंदर हमारे पास हिम्मतनगर था जो कि नॉर्थ गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। और जो हमारे पास कच्छ है, जो कच्छ का पूरा जो टेरेंस है वो कोस्टल और हिंटरलैंड का। फिर अगर हम हाइड्रोलॉजिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें गुजरात के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर स्पेशली जो हमारा मेन लैंड्स एरिया है वहाँ पे हमें एल्यूविलियम देखने को मिलता है। फिर जो हमारा जो साउथ गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें बसाल्ट देखने को मिलता है। कच्छ के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि कच्छ के अंदर हमारे मल्टीपल हमें बसाल्ट देखने को मिलता है, सैंडस्टोन है, क्वार्टिसाइट है, लाइमस्टोन है इवन। तो ये एक एक्वीफर्स हमें गुजरात के अंदर देखने मिलते हैं। अगर हम एक एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर हमें जनरली बसाल्ट देखने को मिलता है, जो कि वेस्टर्न पार्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमें बेसाल्ट देखने को मिलता है। जो मिड टेरेन है वहाँ पे हमें एल्यूविलियम देखने को मिलता है। और जो वेस्टर्न ईस्टर्न साइड के जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमें सैंडस्टोन और क्वार्टिसाइट देखने को मिलते हैं। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल के अंदर गुजरात में हम रेनफॉल के हिसाब से गुजरात को 7 रीजन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम कच्छ की बात करें तो कच्छ के अंदर हम देख सकते हैं कि जो एवरेज रेनफॉल है वो लेस देन 550 mm का है। उसी तरह अगर हम साउथ गुजरात की बात करें तो वहाँ सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है गुजरात में। अगर हम सेंट्रल गुजरात की बात करें, सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात में, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मीडियम रेनफॉल होता है। और यहाँ जो सौराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे भी मीडियम से थोड़ा लो रेनफॉल होता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ईस्टर्न ये जो इस तरफ के जो वेस्टर्न साइड के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे लो रेनफॉल है। जनरली वहाँ का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है जो एमपी का वो है 920 mm। तो और उससे जो वेस्टर्न सदर्न साइड के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें लो रेनफॉल है। और जो ईस्टर्न सदर्न साइड और ईस्टर्न नॉर्दर्न साइड के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे हमें ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम ग्राउंड वाटर सिनेरियो की बात करें कि ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम देखें, अगर हम उसको टेम्पोरल में देखें तो एक हमारे पास ये मैप है जो शो कर रहा है 2004 में कहाँ पे हमारे सेफ जोन से, कहाँ पे हमारे सेमी क्रिटिकल्स और ओवर एक्सप्लॉयटेड जोन से। तो अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि हमने स्टडी एरिया क्यों हमने गुजरात के अंदर नॉर्थ गुजरात का जो हिम्मतनगर है वो चूज किए और कच्छ जो हमने चूज किया है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा हमें जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो दिख रहा है ग्राउंड वाटर का वो हमें नॉर्थ गुजरात में दिख रहा है। और जो कच्छ का जो रीजन है वहाँ पे हमें दिख रहा है। दूसरे अगर बात करें तो दूसरी जगह पे इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। जनरली साउथ गुजरात और सौराष्ट्र हिंटरलैंड वो सेमी क्रिटिकल या सेफ जोन में आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम अगर 2017 की बात करें ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे हम ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे हम कवर अप देख सकते हैं कि साउथ गुजरात, सौराष्ट्र कोस्टल, सेंट्रल गुजरात में मतलब कवर अप हो गए। वो जो पहले सेमी क्रिटिकल थे वो सेफ जोन में आ गए हैं। लेकिन अभी भी जो नॉर्थ गुजरात है और कच्छ रीजन है वहाँ पे अभी भी क्रिटिकल जोन में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है। और कच्छ के अंदर कुछ तालुका है जैसे कि रापर है, नखत्राणा है, तो वहाँ पे सेमी क्रिटिकल है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं बनासकांठा, महसाणा, गांधीनगर, वो नॉर्थ गुजरात में ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। इसी तरह अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में जनरली हमें देख सकते हैं कि मोस्टली सेफ जोन हमें दिख रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जो वेस्टर्न साइड के जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि इंदौर, धार, बरवानी, उज्जैन, वहाँ पे हमें क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल हमें दिख रहे हैं और ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी वहाँ पे ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली अगर हम 2016 की बात करें पोस्ट सेकेंड सिनेरियो एमपी का, तो उसके अंदर
जो हमारे मिड जो एरिया है, मिड रीजन से, वहाँ पे हमें मतलब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रिटिकल थे वो सेमी क्रिटिकल या सेफ जोन में चले गए, लेकिन अभी भी जो ईस्टर्न पार्ट्स वेस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे अभी भी क्रिटिकल जोन बना हुआ है और एक्सप्लोटेड भी है। फिर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर यूटिलाइजेशन में अगर हम बात करें सबसे पहले डिमांड और सप्लाई की एमपी के अंदर, तो एमपी के अंदर हमें दिख रहा है कि जो सदर्न साइड के जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो रही है वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। और वाइस वर्सा इन अगर हम यहाँ पे देखें वेस्टर्न साइड में तो वहाँ पे लो वाटर अवेलेबिलिटी है। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें वाटर डिमांड की, तो डिमांड सबसे ज्यादा हमें दिख रही है जो वेस्टर्न नॉर्दर्न साइड में, और जो सदर्न साइड है सदर्न वेस्ट ईस्टर्न साइड वहाँ पे हमें कम दिखाई दे रही है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर हम वाटर बैलेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें डिफिसिट जो वाटर बैलेंस है वो हमें वेस्टर्न साइड में दिख रहा है, जैसे कि धार, उज्जैन, रायगढ़, राजगढ़, अगर मालवा, और ये सब जो पार्ट्स है वेस्टर्न साइड के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे हमें बहुत मतलब डिफिसिट दिखाई दे रहा है। जबकि जो सदर्न पार्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे हमें ज्यादा सरप्लस वाटर दिखाई दे रहा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड द काइंड ऑफ जियोलॉजी एंड टेरेन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें परसेंट वाइज हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव में जो है वहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जो धार वगैरह जो है वहाँ पे हमें नेगेटिव वाटर डिफिसिट वाटर सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, और जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे हमें पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिल रहा है। सो अगर हम सिमिलरली अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात को हम अगर रीजन्स में डिवाइड करें, एम आई ऑडिबल? हाँ कौशल। हेलो, यस सर, यस कौशल। अगर हम गुजरात की डिमांड सप्लाई वाटर की सिनेरियो की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, कच्छ और सेंट्रल गुजरात में ज्यादा एक्सप्लोटेशन है। सेंट्रल गुजरात की अगर हम बात करें तो 74% गैप है डिमांड और सप्लाई में। ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो 85% का गैप है। कच्छ की बात करें तो हम 61% का गैप है, और नॉर्थ गुजरात में भी 43% का गैप है। यहाँ पे सिर्फ एक ही जो रीजन है जैसे साउथ गुजरात है वहाँ पे हमें नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पे सरप्लस वाटर मतलब वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है। सो मतलब ओवरऑल अगर कंक्लूड करें यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि जो नॉर्थ गुजरात और कच्छ रीजन है वहाँ पे बहुत ही जरूर है कि हमें वहाँ पे ग्राउंड वाटर मैनेज करने की, क्योंकि नॉर्थ गुजरात में क्या है कि जो ज्यादातर वाटर है वो इम्पोर्टेड वाटर है नर्मदा रिवर का, जो साउथ गुजरात से इंपोर्ट होके कच्छ तक जाता है और नॉर्थ गुजरात तक जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे कुछ मतलब नेगेटिव अगर इफेक्ट हुआ कि अगर पानी अगर नहीं मिल रहा है तो फिर नॉर्थ गुजरात में वैसे ही वहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लोटेड है तो वो और भी मतलब वहाँ पे ड्रास्टिक सिनेरियो हमें दिख सकते हैं कच्छ में और नॉर्थ गुजरात में। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अच्छे वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंटरवेंशन करें, और सप्लाई साइड मैनेजमेंट और डिमांड साइड मैनेजमेंट दोनों तरफ हमें वहाँ पे इंटरवेंशन करने की बहुत जरूरत है। ओके दीपक जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये एक बाकी था। अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम देखते हैं गुजरात के अंदर तो नॉर्थ गुजरात जो है वहाँ पे मतलब डेयरी बहुत इमर्जिंग सेक्टर है, तो उसकी वजह से क्या है कि लाइफ स्टॉक की जो वाटर डिमांड है वो बहुत बढ़ रही है। इवन एग्रीकल्चर में भी 18% एग्रीकल्चर की वाटर डिमांड का जो शेयर है वो नॉर्थ गुजरात में है। लाइफ स्टॉक में 26% का है, डोमेस्टिक में 12% का है, लाइक दिस। जी दीपक जी। Thank you, Kaushal. Now I'm just going to describe the field level intervention which have been introduced by the various organizations in the field regarding this participatory groundwater management. Especially these photographs are from Maska village of Mandvi, which is in Kutch district of Gujarat. Kutch is the largest district of Gujarat. You can see that they have introduced us
groundwater recharge system by borewell. So what they have done, they have installed a borewell in the river base, so they can recharge the borewell for drinking water. And this is the this intervention was made by ACT, which is a very well-known organization of Gujarat, and the community has participated in this intervention. And due to this intervention, the TDS level has reduced in the this village, and the groundwater table has increased, and availability of water number of month has also increased at the same time. So this is one of the good field level intervention that can be scaled up, and that can be recommended for policy kind of platform, I think. So this is from Maska, Kutch. Next question. And this is from MP. So the NGO is the AKRSP, Aga Khan Rural Support Program, and this is in Khandwa district of MP, where you can see these are two different interventions. One is a rooftop rainwater harvesting system, which was installed by the NGO, and second one is the second photograph is about well recharge, which is connected through the rainwater, or just harvested to just directly to the well. So the water level has increased, and they can store more water in this domestic side, as well as in this agriculture side. They can have more number of days water. So both intervention have been increase the level of water, and so in this particular this district. The other intervention is in Dhar district. Kaushal, may I just this is in Dhar MP. The area is fluoride affected, and there was people were having problem getting this potable drinking water. So they were just having the water was having high water was highly contaminated by this fluoride. So what the organization did with they just connected, they made a check dam, and check dam was connected with the local this way they just connected with they were able to make their own people community managed water supply system, and almost around 48 families are getting water through this distribution system. So this is the second intervention in MP. So this is also like a wonderful initiative taken by NGO, and now this system is being managed by the community itself, and no external stakeholder is involved in this system. So this is the other community managed groundwater recharge system, which we studied in this study. Kaushal, next. So this is the from the field, how the in Kutch they mobilize people, how the resources were mobilized, and how they managed to get all the stakeholders on the same platform. So how which helped the organization to get it done, and this is the process. So you can see the photographs as well as this the structures diagram, the approach, and the common factor in all these initiatives is community participation. So they are participating and managing their own groundwater management structures, as well as this
supply system. Kaushal, next. So thank you for being patient and listening this presentation. Thank you, Deepak and Kaushal, for this presentation. Then we have our last presentation in the field, and then we have a summary the report of the project. So we'll go to Munhar from Assam. He's with an organization called SESTA, and they are working on this project in Assam. So over to Munhar. Hello everyone, good afternoon. Myself Mahanur Ali. I am from Nalbari district, working in SESTA from last 5 years, and I am from agriculture background. So today on behalf of SESTA, I am going to present the presentation. So study on water quality trends in groundwater of Assam and its solutions in collective approach. So this is the first case study that is on water quality trends in groundwater of Digboi, Assam. Why Digboi? I will explain it. And the objective of the study was to illustrate the water quality trends of Digboi in Tinsukia district. So objective was to illustrate the water quality trends of Digboi in Tinsukia district, because Digboi refinery was the oldest and largest refineries in Asia. And second was to study the various physiochemical parameters, that is pH, turbidity, total dissolved solids, electrical conductivity, alkalinity, hardness, nitrate chloride, sulfate chloride, sodium, potassium, and total iron content were analyzed. So this was the map of the working survey, that is Digboi and Tinsukia district of Assam. And these were some of the relationship between the water level fluctuation and iron in Tinsukia district, and second one's on relationship between water level fluctuation and iron in Digboi district, that I want to show in a diagrammatic way. And these are some of the values of pH, that is Asian chemical oxygen demand of various type of source in Digboi. That is SI is pH 9.4 and electrical conductivity is 392. So these are some of the actual data from the survey plot. And second was the refinery discharge Dag well sample number 1 got pH 6.79, electrical conductivity 994, chemical oxygen demand 4600. And in Dag well 2, it has found chemical oxygen demand is too high, that is 6400, pH is low 3.0 high. And in Dag well 3, pH is very high, that is 2.03, and chemical oxygen demand was 5400. And these were some of the histograms showing trends of iron contamination in Digboi and Tinsukia district, Assam, that I want to show in a diagrammatic way. Year-wise, it has been shown in the diagram. In the last 2 years, it has increased tremendously. And some of the findings from that survey was that groundwater quality in respect to physiochemical parameters in Digboi deteriorate slowly with the passage of time every year. The trace heavy metals analysis of groundwater from monitoring wells indicates their concentration above the maximum permissible limit in some locations. And then high concentration of iron above the permissible liter prescribed by Indian standard observed in groundwater samples during in monsoon season is very less, and however concentration of iron in the same area will be lesser during monsoon season. So previous study also point that high concentration of manganese has lead in groundwater samples, which may be attributed to leakage from the unprotected domestic sewage and industrial effluents, as most of the heavy metals and in particular lead metal is generated from the street dust. Then there is also need for immediate attention also as per the study. Then this was the case study on groundwater quality of Western Dorong district, Assam, nearby Guwahati. And study has been carried out on groundwater contamination with respect to some of the physiochemical parameters in Dorong district for the researchers of the Dorong College. And iron is estimated by UV spectrometer using 1 and 10 phenolphthalein monohydrate. Then arsenic in groundwater are estimated by using atomic absorption spectrometer, then Parkin-Elmer. Then other parameters are estimated as per standard method of
APHA, American Public Health Association. Unvaried statistics along with the skewness, kurtosis, and test have been employed to test the distribution normality for each parameters. The study also reveals that the groundwater of the area is highly contaminated with arsenic and iron. So keeping in view of the high concentration of iron, it is suggested to test the probability of groundwater of the area before using it for drinking at that survey time. The groundwater quality map for the study area was prepared by using geospecific technique. So this is the some of the map of the working area in Durham district, and these are some of the location of the sample study that have been done in 14 villages of Durham district, and materials and methodology that they have used. I will not go for it. And the values of parameters against sample statistic, it has been shown in the table. So from each villages, that is pH, arsenic, iron, and F. Then these are some of the pH variation of iron and arsenic that has been shown in diagrammatically. And these are some of the GIS mapping of arsenic, then iron. And these are some of the descriptive statistics of iron, then pH, arsenic from groundwater in the study area. So some of the findings from the survey was that statistical observation on pH, iron, arsenic in groundwater of western part of the district shows that all these parameters exhibit an asymmetric distribution with a long asymmetric tail on the right of the median. Then in the multiple regressions, the independent variables, arsenic has positive correlation with the dependent variable, iron and pH, but has negative correlation with the fluoride also. It is also observed that the groundwater of the area is contaminated with arsenic and iron in Durham district. A sizable sum of groundwater sample contained iron and alert level. The concentration of fluoride in the groundwaters of area are either low or moderate and within the guideline values of the World Health Organization. Then these are some of the works that has been going on in Assam. That is 5% irrigation tank for lift irrigation during Rabi season. So Manrega, CSR, actually through Manrega. And so these are some of the works that are going on in the Assam actually. That is 5% irrigation tank for harvesting the rainwater and for use it as a lift irrigation during the off season. So this has been leveraged through Manrega, one of the scheme, and Assam it is called Swa-Nirbhar Nari Atma-Nirbhar Assam. So under individual beneficiary schemes, we are working with Manrega, that is PRA Panchayat bodies in 8 districts of Assam, and some of the farm funds through leveraged through the CSR fund. So these are some of the activities that has been already completed till now. And these are some of the saturation plan that Shasta is working till now. That is one of the Gram Panchayat development at village organization level and submitted consolidated plan at Panchayat level for irrigation purpose through the individual beneficiary scheme. And the scheme is called the Swa-Nirbhar Nari Atma-Nirbhar Assam. It is for all the livelihood actually, where Hampon is one of the scheme. Then 5% irrigation training convergence with CSR, Fishery Department and Manrega, and leverage of 5% irrigation tank till now is 100. So these are some of the saturation plan, and that's much only from my side. Thank you. Thank you, Manur and Vitupan for this presentation. Now I'll request CEO of Rajiv Gandhi Foundation and Director of Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Study, Mr. Vijay Mahajan, to summarize the study and tell us the major learnings from the field. It's really quite a treat to listen to all of you on the World Water Day. Such a rich tapestry of information, field insights, many lessons. It's really fantastic 2.5 hours spent together, and we could have done another half an hour, I'm sure. But I'll keep it very brief because you have all
given while you were talking many insights. So what I've tried to do is identify the main goal. The main goal, of course, is that we want to achieve sustainable, equitable, and efficient use of groundwater. And to do this, there's an eightfold path. हिंदी में जो मेरे साथी हैं उनके लिए साथ ही साथ हिंदी में भी बनाए हैं. तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया है उससे जो सबक मिले हैं उससे हमने 8 सूत्र निकाले हैं. तो ये 8 सूत्रीय जो पथ है उसके बारे में बात करूंगा. लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि हमें एक सतत और एक समानतापूर्व और एक कुशल उपयोग की स्थिति में पहुंचना है. और आज की स्थिति जो है जहां पूरे भारतवर्ष में अभी बताते हैं 62% ग्राउंड वाटर यूसेज है ऑफ द रिचार्जेबल लेवल, लेकिन वो शायद अंडर एस्टिमेट है. मेरे ख्याल से हम 70-75 के आसपास पहुंच चुके हैं क्योंकि बहुत जगह डेटा पूरी तरह से कलेक्ट नहीं होता है. तो अगर इसको हमें कुछ करना है तो we need a new approach which is integrated. Both surface and groundwater is looked at simultaneously. आपकी सबकी presentation में you have captured that point that you can't talk of groundwater without talking of surface water. And likewise, you can't talk of only one type of usage. You have to look at all the usages, agricultural, industrial, and domestic uses, and the trade-off between these. So if we have to look at this, जैसे दीपक जी ने कहा कि we start from the demand side management, agriculture में जैसे पानी फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में they're trying to improve the use of water through efficient मैनेजमेंट. और कई जगह में दूसरी जगह कुछ अलग अलग टेक्निक्स यूज हो रहे हैं, चाहे ड्रिप हो या स्प्रिंकलर्स हो. बट ऑल दीज आर एक्चुअली relatively minor interventions compared to what policy can do. The fact is agriculture is a major user of groundwater, and within agriculture 3 crops, rice, wheat and sugarcane, are very major users of groundwater. Now, as long as our agricultural prices do not change and do not unnecessarily incentivize farmers to grow these crops well beyond domestic demand, well beyond sustainable possibilities of cultivation, we will continue to both deplete groundwater as well as overproduce these crops. And that is why the whole demand about establishing MSP for all, even other crops, needs to be taken into account the ecological dimension also. It is not only the question of whether farmers get remunerative price. That's why in my listing, I put sustainable first, equitable next, and efficient last. So far, it has been focused on efficiency, meaning efficiency in terms of maximizing production. Uske baad, if possible, some equity, sabko pani milna chahiye. And sustainability has been neglected, as we see. We have to reverse that. तो उसके करने के लिए जो अभी आप लोगों ने बहुत सारे examples दिए हैं, there are, first thing is the need for data. So there's some public data available, and as we saw from the wonderful maps that were made both by Deepak ji and by the DAC friends, Kaushal and Deepak, that we can use public data to make very detailed maps to understand the overall situation in a state or in a district. But in addition to that, we need participatory data collection. And the examples of this, best example was from West Bengal.
the very detailed network of data collection that has been established, particularly in the Sundarban zone, that needs to be replicated in multiple locations. Then the understanding of the prevailing policy framework. अभी क्या कानून चल रहा है, क्या नीतियां हैं, और उनको हमें समझना और उसका लाभकारी उपयोग करना बहुत जरूरी है. Because legal frameworks are there in almost every state, as Jeet showed in his presentation. In some states, they're a little behind. But the fact is that they are mostly neglected in practice. And the greatest example of that was, of course, given by Arundhati in Tamil Nadu, where the violation after violation and overuse continues. But we have to, as communities, understand what the laws are. And the next step is whistleblowing in the face of non-implementation of the laws. अगर कानून या विनियम जो हैं, रेगुलेशन जो हैं, अगर वो कार्यान्वयन नहीं हो रहे हैं, तो उनके विरोध में आवाज उठाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम है इस अष्टसूत्री कदम में. ये जगह जगह हमें करना होगा, और उसके लिए कम्युनिटी को उसके अधिकारों के बारे में और उस कानून के बारे में उनकी समझ बढ़ानी होगी. और वहाँ जो जानकार हैं, जैसे भूजल जानकार या जल दूत और ये सब लोग जो हैं, इन्हें केवल टेक्निकल ही नहीं, इन्हें जो रेगुलेटरी नॉलेज है वो भी हमें देनी पड़ेगी. Then we come to the most important positive step, which is planning for balancing demand with supply. And this is best done at the level of a watershed and a corresponding aquifer. So surface के लिए watershed management committees होती हैं, और कई जगह, very few places, there are now aquifer management committees. We have to find, and I particularly request Yugandhar and Deepak Sharma ji, to think about how to bring about a certain level of coherence between the institutional arrangements related to surface water and groundwater. In both cases, the local institutions are weak, but the fact is that the geographical boundaries of watersheds don't always coincide with the geographical boundaries of aquifers. And we have to figure out a way by which the two can be overlapped so that they reinforce each other. And ideally speaking, we need an integrated water management association, which looks at both the watershed on the surface for maximizing surface water conservation and the aquifers for optimizing the use. तो ये जो above ground, the visible part जो है, और जो below ground, underground, जो invisible part है, दोनों का integration हमें जरूरी करना पड़ेगा, और वो स्थानीय स्तर पे ही हो सकता है. And that is why आपूर्ति के साथ मांग को संतुलित करने के लिए जो योजना है, वो बाहर से आके तकनीकी लोग बनाएंगे और चले जाएंगे, वो काम नहीं होगा. उसे हमें स्थानीय ही करना पड़ेगा. उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण युगांधर जी ने जालना का दिया था, which is a very good case study. But I think Deepak ji has also identified 2-3 other case studies जिसको हम और detail में expand करेंगे. There are of course many examples where people have tried to improve surface water conservation and use it specifically for recharge, but that is only partial approach. I'm talking of a full milli watershed or sub-basin approach, where we take the entire groundwater as well as surface water together. इसके बाद we come next to the point of enhancing supply, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया, और बहुत सारे उदाहरण आप सब लोगों ने दिया. And this is not only for quantity, it's also for quality. There were 2 or 3 very good examples. Kutch से जो था वो example था, where salinity, Sundarbans में they are now planning injection approach.
और हमने धार का एग्जांपल देखा जहाँ फ्लोराइड का प्रॉब्लम was solved through surface water harvesting. So the supply of groundwater through surface water conservation and using that to recharge is not only about quantity, it's also about quality. For इसके there are lots and lots of examples, but I think the connection जो है हमें हर एक watershed में बनाना जरूरी होगा. The seventh step is rationalizing demand for water by rationalizing prices for crops and energy. तो क्रॉप प्राइसिंग की तो मैंने बात अभी पहले ही की थी, लेकिन एनर्जी प्राइसिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्टिंग फैक्टर है. कई स्टेट्स में कंप्लीटली फ्री बिजली दी जा रही है. ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में subsidized electricity for farm purposes, and what that does is it encourages farmers to overdraw groundwater because there's no cost either of the water or of the energy, and this is a major reason for the imbalance and issues. Then the last point is that we have to build the capacity of the community in all the above functions. क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, आपने आज देखा होगा in today's study itself we saw that in every state there are different hydrological regimes, there are different hydrogeographical regimes, there are the subsoil structures as well as the above surface rainfall patterns. They're all different. Even within a district they can vary, within the state तो है ही. तो इस तरह की डाइवर्सिटी को सेंट्रली प्लान करके डील नहीं किया जा सकता. इट हैज टू बी डन लोकली. इफ इट हैज टू बी डन लोकली देन community participation is a must, and if community participation is a must, then community must be first made aware and knowledgeable, and then they can participate effectively. It's not participation just for namesake. So this eightfold path, if it is followed, what it leads to is really something incredible. बहुत अविश्वसनीय अच्छे positive नतीजे मिलते हैं. We've seen many examples. You saw some photographs also. Thank you all of you for contributing to identifying these many examples. I want to end by showing you just the today we were actually supposed to release the report. लेकिन due to a number of reasons, the COVID and other problems, अभी 2 states तो हुई नहीं है, but still we have put together an outline which I want to end by showing. So the name of the study is now Groundwater Management in India, multi-state field study of availability, utilization and locally appropriate solutions for sustainable, equitable and efficient use of groundwater. तो एक तरह से जो objective है वो title में ही हमने डाल दिया है. And आज इसका रिलीज किया है. So this is, I'll just walk you through the table of contents, not every line, but basically the first volume, it's a 2-volume study. First volume is the all India overview, जिसमें एक groundwater के बारे में एक overview है, study के बारे में overview है. What are the objectives? What is the methodology? What are the study states and partners? फिर जो context and general features हैं, geography, geology, hydrology, hydrogeology, वो सब उसमें है. Then there is a chapter on groundwater availability and utilization, basically where there is an increasing trend of imbalance, जिसके बारे में अलग-अलग states का data you have all shown. The supply side is characterized by rainfall variance on the one side and neglect of storage and recharge on the other side. And the demand side is characterized by distortions due to faulty sectoral and energy pricing policies that we talked about. Then there's a whole section on groundwater policies and governance, talking about the laws and regulations and the institutional frameworks.
Then the most important chapter is, of course, the locally appropriate solutions. And usme jo eightfold path hai, which I just talked to you in detail, because this section you had not seen, so is pe maine sabse zyada emphasis diya. Then we go to the volume 2 of the report, which is the respective state reports. और उसमें हर एक में same 4 sections are there: context and key features, groundwater availability and utilization. This includes both quantity and quality issues, groundwater policies and governance in the state, and then locally appropriate solutions. So इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और West Bengal, Assam, again, and then 2 states are still to be completed. Punjab में थोड़ा काम अभी शुरू किया है दीपक जी ने, but he is still to complete it, and Uganda is still to complete Telangana. But and I think Assam also needs to do some more work on their, particularly on the the innovations for improving the recharge and all of that, and also a little bit more work on the regulatory framework for Assam. So I think another 4 to 6 weeks we will be working with you, and Jeet will be in touch with all of you. आज जो आपने जो presentations PPTs दिए, please share all of them. They're all really wonderful, and we will go through them in more detail. I'll also go through the recording of this Zoom once more, so that we can figure out if there are any issues that we have left out in the summary. With that, I really want to thank all of you, not only for participating in the study, but also patiently listening to this 2 hour 45 minutes of conversation. Thank you so much, and thank you Jeet and Arun for organizing this, and all the state coordinators of the study. Thank you very much.